पवन जी ज्वाइंट है क्या? पवन जी हैव यू ज्वाइंड? ఓపెన్ చేయను మొబైల్లో నీకు ఒక లింక్ పంపించా, దాంట్లో యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి చూడు, వస్తుందా లైవ్? త్వరగా త్వరగా, ఇది లైవ్ అయిపోతే టెన్షన్ పోయింది. ఇప్పుడే పంపించా. ఏంటి ఏం రాలేదు? ఇటీ ఇటీ ఒకసారి నాకు. అరే సరే ఎందుకు రాలా? ఇక్కడ చూడు ఎట్లా వచ్చిందో చాక్లెట్. దీంట్లో డాటా ఆన్ చేసుకోవాలి కదా, ఇది కూడా చెప్పాలా? చెప్పు. ఎందుకు రావట్లేదు? Hello sir, am I audible? Yes sir. Hello. आ रही है सर आवाज? దీంట్లో డాటా ఆన్ చేసుకోవాలి కదా, ఇది కూడా చెప్పాలా? చెప్పు. ఏమని చెప్పా? సౌండ్ చేయొద్దని చెప్పు. Hello. सर आपकी आवाज आ रही है सर, रवि सर, अगर लगता है हम लोगों की आवाज नहीं जा रही है आपको? आ रही है, सबकी आ रही है भाई. ओके सर. सर रवि सर वो ऑनलाइन वो लाइव टेलीकास्ट का टेस्ट हो रहा है सर, एक ही मिनट. हाँ सर यूट्यूब में आ रहा है सर. रवि सर हेलो, वेबसाइट पे वो हुआ है कि नहीं? हाँ वेबसाइट में हो रहा है सर, कौन को दे दिया हूँ लिंक, कर रहा है सर. ठीक है सर यूट्यूब का लिंक शेयर कीजिए ग्रुप में,
जिससे शेयर किया जा सके। देंगे तो वो YouTube देखने लगेगा, इधर इधर ज्यादा लोग दिखेगा नहीं ना। एक मिनट सर। अच्छा मैं आवाज नहीं आ रही है आपकी। इधर सर हाँ यूट्यूब की आवाज नहीं आ रही। किसका आवाज नहीं आ रहा है प्रशांत? यूट्यूब पे आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। YouTube पे मेरा आवाज नहीं आ रहा है। YouTube पे क्यों आवाज नहीं आ रहा है? एक मिनट कर रहा हूँ 1 मिनट। शेयर कंप्यूटर साउंड करिए सर। कंप्यूटर का बात नहीं ना, YouTube में किसी का भी हो आना चाहिए ना। आना चाहिए। 1 मिनट। हेलो हेलो। शेयर कंप्यूटर साउंड करिए सर। नहीं शेयर तो कर दिया ना। किसी का भी हो आना चाहिए ना। आना चाहिए। वो आ रहा है प्रश्न। देखो ये इसलिए ये हो रहा है ना, इको हो रहा है मेरा। आ रहा है सर, अब आ रहा है सर। हाँ वो क्या है, आप थोड़ा लैग में, मतलब थोड़ा टाइम के बाद ओपन किया होगा। जी जी सर, जी सर, जी सर। लाइव में नहीं गया होगा, मतलब थोड़ा फॉरवर्ड कर दो। हाँ हाँ, वो लाइव वाला जो है यूट्यूब पे थोड़ा सा लैग रह रहा है। लैग 15 सेकंड का लैग है एक्चुअली, कल कैलकुलेट किया है। यस सर 15 सेकंड। ओके सर। अब आ रहा है सर। वो क्या है కొంచెం टेस्ट అయింది। प्रशांत थोड़ा हमारा कोलिजियम ग्रुप है ना, उसमें डाल दो ना। बहुत सारे लोग विदाउट वो सर्किल बिना प्रीफिक्स करके नाम डाल रहा है। सर कॉलेजियम ग्रुप में हम नहीं है सर। ओके मैं डाल। आप किससे बात कर रहे हो? श्रीधर मैं डाल रहा हूँ। सर यस सर। मैं डाल रहा हूँ, कोई बात नहीं। यस सर यस सर यस सर। रिस्पांस बढ़िया है सर। ऑलरेडी 126 लोग हो गया है। देखो श्रीधर डाल दिया। यस सर यस सर। हाफ एन आवर है। उधर YouTube में 15 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है सर, सेम।
सर देख लीजिए सर, रवि सर वेबसाइट में भी हो गया। सर ये रख लिया ना, मेरे डायरी में उसमें रहने दो। रहने रानी रहने, मेरे को एक कागज दे दो, कागज।
అందరూ దీని నుంచి లాగిన్ అవ్వమని.
कर्नाटका से अजय ये कोई वीरांजनेलु करके वीरांजनेलु अंडरस्कोर एसीएस कर्नाटका करके ज्वाइन होना चाहता है, उनको बोलिए। सर रवि सर हाँ हाँ रवि सर अभी 240। हेलो, हाँ श्रीधर, हेलो।
अजय, ये सीवीपी कर्नाटका करके ज्वाइन होना चाहता है। कर्नाटका टीम कोई बोलिएगा, पल्लवी कामा सीवीपी कामा कर्नाटका करके। एक मिनट में एडमिन करके कर देता हूँ।
सर सभी पार्टिसिपेंट को ये कहना है कि अभी हमारे जीएम निसार साहब इस मीटिंग में जुड़ चुके हैं। श्रीधर जी, मेरी वॉइस आ रही है सही? हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है सर। आप सभी लोगों को ये बताना है कि हमारे जीएम निसार, सीनियर जीएम निसार साहब, एम गुप्ता साहब इस मीटिंग में जुड़ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में अब हमारे माननीय सीएमडी महोदय और हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर एचआर महोदय जुड़ने वाले हैं। आप सभी से आने पे उनका स्वागत तालियां बजा के करेंगे। श्रीधर जी, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यस सर, यस सर। सर मैंने मेल भेज दिया सर, सीएमडी साहब को और डायरेक्टर सर को। ठीक है, मिल गया है लिंक। क्लिक करने से डायरेक्ट वेटिंग रूम में भी आने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये हो जाएगा, जी आ जी, जाएगा। ऐसे आप वेटिंग रूम वॉच करते रहिएगा। रवि भाई, आप है ना? श्रीधर जी, रवि भाई हैं? रवि सर है सर। Yes, Vasi, I'm here. Don't worry. ओके ओके। सर डायरेक्टर एचआर साहब ज्वाइन हो रहे हैं सर। सर डायरेक्टर एचआर सर ज्वाइन हुआ सर। आ गए सर? यस सर। मैं डायरेक्टर एचआर साहब का, सर उनका श्रीधर जी ऑडियो ऑन कर देगा। यस सर, साहब को अनम्यूट। साहब को यस सर, अनम्यूट हो गया सर। डायरेक्टर एचआर साहब का हम अपने एजीएम कम ऑल इंडिया सीडब्ल्यूसी के ओपन सेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर सभी लोग अभी आपको यहाँ से बधाई दे रहे हैं सर, और धन्यवाद दे रहे हैं आपके ज्वाइन करने का। थैंक यू।
कितने लोग जुड़े हुए हैं आज? सर अभी हमारे पास 308 पार्टिसिपेंट हैं सर, अच्छा, अभी ऑनलाइन में, और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हमने व्यवस्था की है सर, ताकि सभी एम्प्लॉय जहां से भी हैं वो हमारा एक वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं सर। ओके, वेरी गुड। उस वेबसाइट से वो जो भी संदेश यहाँ देना चाहेंगे आप सर और सीएमडी महोदय, वो वहां से देख सकेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर हम लोग सीएमडी साहब का वेट कर लें 2 मिनट। हाँ हाँ, बिल्कुल वेट करें। हमने उनको मैसेज भिजवाया है। सर। एक्चुअली बोर्ड रूम में उनकी एमटीएनएल की मीटिंग चल रही है इसी बिल्डिंग में। जी सर। और उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही शुरू हो तो मेरे को बताइए, तो वो जी अपने सर। रूम में आएंगे और जी अपने सर। रूम से फिर वो अपने लैपटॉप से ऑन करेंगे। थैंक यू सर। ओके। तो आप सब लोग अपने अपने जगह पे हैं या कहीं कुछ लोग इकट्ठे भी हुए हैं? नहीं, सभी लोग सर अपने अपने जगहों पे ही हैं, कोई भी फिजिकल गैदरिंग कहीं नहीं है सर। एवरीबडी इज सिटिंग फ्रॉम देयर ओन लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, और सभी अपने अपने सर्किल से, अपने ऑफिस से, दफ्तर से या घरों से जुड़े हुए हैं सर। वेरी गुड। आज सेकेंड सैटरडे होने की वजह से सर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में छुट्टियां भी हैं, तो इसलिए भी थोड़ा ये आसानी हो गई है सर। काफी सारे लोग वेटिंग रूम में देख रहे हैं। आपके एडमिन होस्ट को ना उनको अलाउ करना पड़ेगा। जी जी सर, वो हम लोग चाह रहे हैं कि एक्चुअली हमारा जो पार्टिसिपेंट हमने जो पहले फिक्स किया था, क्योंकि 500 का मेरा लिमिट है सर, वो ये परचेज्ड वाला है, तो उस चीज को ध्यान में रख के कि कोई छूटे नहीं। करेक्ट जी। श्रीधर जी आप थोड़ा वेटिंग रूम पे ध्यान रखिएगा, किसी भी टाइम सीएमडी साहब भी आएंगे और बाकी जो लोग आ रहे हैं उनको भी स्क्रूटनिंग करके ज्वाइन कराते रहिएगा। श्रीधर जी आप म्यूट हैं। यस सर, पहले जो प्री डिफाइंड लोग हैं हमारा सर्किल्स नॉमिनेट किया उसको अलाउ कर रहा हूं सर, अगर स्पेस है तो बाकी लोग को भी अलाउ कर दूंगा सर। ओके। यस सर। आप अब जब तक सभी लोग हैं, अच्छा ये वीडियो तो इतना, ये श्रीधर जी वीडियो सभी का ऑफ रखिए, नहीं तो ये उतना शायद बैंडविड्थ ऑफ करता हूं सर। यस सर, यस सर, यस सर। वीडियो सिलेक्टेड ही, मतलब सिर्फ 4-5 लोग जो थे डिसाइडेड उन्हीं का रहेगा। यस सर, यस सर। नहीं तो फिर बैंडविड्थ की इशू आएगी। वो तो लेकिन इंडिविजुअल को ऑफ करना पड़ेगा ना, उनके हाथ में सर ये हम लोग ने सेंट्रली भी डिफाइन कर लिया सर। अच्छा। ऑडियो वीडियो को हम लोगों ने इस मोड में रखा है कि सेंट्रली कंट्रोल करेंगे, ताकि रवीश नजर नहीं आ रहे हैं। नमस्ते सर। सर कहाँ पर हो? यही है सर। दिख नहीं रहा है यार। हाँ, अब नजर आ गए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। मैं सोचा जब हमारे जनरल सेक्रेटरी मुखातिब हैं तो फिर हम एज ए लिसनर इट वाज बेटर टू। नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ, एक वीसी चल रही है। मैं तुमको लगाऊंगा थोड़ी बार लगाऊंगा, डोंट वरी। हाँ, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप। ओके। पहले तो सभी ऑडियंस को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जितने अभी हमारे, जब तक हमारे सीएमडी साहब आते हैं एक विधिवत तरीके से मीटिंग शुरू होगी, उसके पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टर साहब हम लोग के इससे बड़े शॉर्ट नोटिस पे हम लोग, इन्होंने ये मीटिंग एक्चुअली अनाउंस की थी, बनाई थी, और उसके बाद बड़े शॉर्ट नोटिस पे हम लोग साहब के पास गए थे कंसेंट लेने के लिए, डायरेक्टर साहब के पास और सीएमडी साहब के पास। एंड मैं बड़ा आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि साहब ने इमीडिएटली हम लोगों को अपना कंसेंट दिया था, और उसके लिए मैं एक बार पुनः डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चूंकि ये मीटिंग पहली बार जो है ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टर साहब और सीएमडी साहब किसी भी मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, और चूंकि अभी हम सभी जानते हैं कि BSNL 2 में ये एक बहुत ट्रांजिशन फेज चल रहा है, और उसमें मैनेजमेंट का भी रोल उतना ही अहम है जितना एम्प्लॉय का रोल अहम है।
तो उम्मीद है कि आज की मीटिंग काफी फ्रूटफुल होगी, हम लोगों को आगे बढ़ने की दिशा में। बीएसएनएल को भी आगे लेके जाना है और हमें भी आगे बढ़ना है। ये दोनों का एक सामंजस्य बैठाने में ये मीटिंग काफी अहम रहेगी, क्योंकि ये मीटिंग को सारे लोग अक्रॉस द कंट्री सुनेंगे। तो उम्मीद है कि आज आप सभी लोग चूंकि हमारे जो टॉप मैनेजमेंट हैं उनके प्रेजेंस से लाभान्वित होंगे। बस कुछ ही क्षणों में हमारे सीएमडी साहब आ जाते हैं तो हम लोग इस मीटिंग को फॉर्मल स्टार्ट करेंगे। Good afternoon. Yes. Yeah, Sridharji, my voice is clear. Yeah, yeah. Okay. Okay. Then I want to test that. Okay. कोई बचा नहीं। श्रीधर जी, वो वीडियो आपके कंट्रोल में है ना अभी? यस सर। ठीक है। यस सर, आई कैन कंट्रोल सर। ओके सर, लेकिन हम सीएमडी साहब को मेल भी भेजा ना सर। अगर हाँ, सर कोई इशू नहीं। डायरेक्ट वो होगा, मीटिंग रूम में भी नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा हमको? वो साहब है ना, वो बताएंगे ना। यस सर। लेकिन लोग अपने से वीडियो ऑन कर सकते हैं। नहीं, वो जैसे मैं देखता हूँ कोई ऑन करेगा तो मैं बंद कर दे रहा हूँ सर, फिर बाद में वो ऑन नहीं कर पाएगा हमारा परमिशन का अलावा। आप सबको एक बार अनाउंस कर दो कि लोग वीडियो ऑफ ही रखें, हाँ। अपना वीडियो, ताकि वो इशू नहीं आए। Actually, this is around 500 members are going to join. So kindly don't start your video.
If at all you are going to start your video, host will disable your video. Later you cannot start. So kindly put your. सभी पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अभी अपने वीडियो सब लोग ऑफ रखें, because there are more than 400 people are about to join, about 500, so that may create some bandwidth issue. So all are requested to keep in listening mode only. Mute yourself as well, your voice as well as video both. Ajay Pal Singh, Corporate Office. Shankar Sanyal, please put off your video. मैं देख के कर रहा हूँ सर, जैसे कोई करेगा मैं उनको डिजेबल कर देता हूँ सर, नो इश्यू सर. Dear all, please understand, if our videos are off, bandwidth availability is plenty enough, we will get excellent quality of clarity of voice of CMD sir and director sir. सर आ गया सर, CMD सर. हेलो सर आ गया है, मैं अनम्यूट किया हूँ सर. ओके, यस यस, एक मिनट सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर, 1 मिनट सर. एक मिनट सर. हाँ, आप कर लिए? एक मिनट सर, एक मिनट सर. यस सर, कर दिया सर. वेलकम हमारे माननीय सीएमडी महोदय पीके परवार साहब ज्वाइन कर चुके हैं. हम सभी अपने मेंबर्स और पार्टिसिपेंट फिलहाल जो है यहाँ पे सर, उनकी तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर, आपने हमें समय दिया है. और हमारे डायरेक्टर HR साहब और GMSR साहब भी जुड़े हुए हैं सर. और ये जो मीटिंग अभी होगी वो लाइव स्ट्रीमिंग, हम लोग वीडियो ऑडियो लाइव स्ट्रीमिंग भी दिखा रहे हैं. साहब का वीडियो नजर नहीं आ रहा है सर, हमें दिख रहे हैं सर. आपको दिख रहे हैं? अच्छा, ठीक है. ओके. और सर ये हमने मीटिंग जो है लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है, जो हमारे वेबसाइट पे दिख रही, ताकि जो भी लोग हमारे इसमें लिमिटेड मेरे पास स्पेस था ज्वाइन कराने का 500 को, तो बाकी लोग सर उससे लाभान्वित हो सके सर, उसके लिए मैंने इसके लाइव स्ट्रीमिंग का व्यवस्था किया है. धन्यवाद सर, बहुत बहुत. और मैं अभी ये प्रोसीडिंग अपने अभी इस सभा के जो चेयरमैन है रविशील वर्मा जी, उनको हैंडओवर करता हूँ. रविशील जी, और पहले अपने तालियों से स्वागत करें हमें सीएमडी महोदय का, पवन अखंड जी, उसके बाद रविशील वर्मा जी. थैंक यू. ओवर टू रविशील वर्मा जी. नमस्कार सर. नमस्कार रवि जी. Respected Chief Guest of the open session, Sri P.K. Purwar sir ji, Honorable Director Sri Arvind Wadnerkar sir ji, Sri A.M. Gupta ji, Senior GMSR, BSNL Corporate Office, our colleague General Secretary Sri Wasi Ahmed ji, Sri B. Lakshman, Chairman AIGTOA, all my CHQ colleagues, all my colleagues of association, and dear friends and executives who are listening to this open session of AIGTOA. Really, it gives me immense pleasure to welcome you all to this special occasion of open session of AIGTOA, which is based on a very relevant theme, that is BSNL 2.0, the roadmap ahead. I'm really extremely thankful and extend my gratitude on behalf of my association to our chief guest, Sri P.K. Purwar sir ji, CMD BSNL, and Director HR, Sri Arvind Wadnerkar sir ji, and Sri A.M. Gupta sir, who have accepted our invitation on a very short notice.
I'm very sure all the participants and listeners of this meeting will definitely extract the maximum benefit and knowledge from this esteemed session. Dear friends, as you all are aware that almost 1 year back, our beloved company was in one of the most toughest situation, and where even survival of BSNL was appearing difficult. At that time, our CMD Purvar sir has taken over the reins of the company, taken over as leader of the company, and thereafter our current director HR Sri Arvind Wadnekar sir also joined the board. And in the meanwhile, Government of India extended the revival package to MTNL and BSNL, which has given a new lease of life to our beloved company. And now we can think of our future also. Had this revival package would not have been extended to BSNL, it was really difficult to survive in this toughest time. And this was not possible if our current CMD was not in chair. But for his efforts, it was entirely difficult. Today, his combined and sustained efforts across various platforms convinced government that yes, BSNL needs to be revived, BSNL needs to be survived, and BSNL is the most important strategic asset of nation. And at the same time, I would also say that this step, this survival, this revival would not have been possible if the combined and sustained efforts of employees was also not extended. And we are really thankful to have such a management who has taken the company somewhat out of the toughest situation in which we were placed in. I'm proud to state that we are having one of the most efficient and trustworthy leader in the form of our beloved CMD BSNL Purvar sir, that he's having all the arsenal in his armory which can take this company again back to its greatest heights. All he requires is unparalleled faith, unparalleled cooperation for the decisions which are being taken for the best in the best interest of our beloved company BSNL. And on behalf of my executives, I assure you, sir, wherever the steps are there, wherever the decisions are there, which are taken for the benefits of BSNL, AIGTOA and executives will definitely lend all their support, all their cooperation, and we are ready to work 24/7 for the survival and revival of our beloved company BSNL. CMD sir today also is fighting hard at all forums to secure our interest. You all are aware how much difficulty we are facing in the rollout of 4G, and the voice of BSNL is reaching to all places. It is just because of our honorable CMD BSNL. Thank you, sir. Thank you for this, and we are really thankful to have you between us. Thank you, sir, for accepting our invitation. I also welcome our honorable Director HR, Sri Arvind Wadnekar, sir, to this open session. Friends, today I can without any hesitation say that we are having one director, we are having head of an HR group who is one of the most compassionate director HR we could have ever got. He is a person who understands our pain, who understands our sufferings, and tries to solve the problem with a positive frame of mind. And definitely, solid outcome doesn't appear to be visible. Yes, it is the truth. You all may say that we have not got in physical anything, but believe me, his efforts are there, his sustained efforts are there, and it's 20 years of legacy, and it takes time to change that. And that is one of the major roadblocks. This legacy setup of BSNL, which has been there for the last 20 years, is a major roadblock that we are facing in the form of our
burning HR issues, be it superannuation benefits, be it promotional benefits, be it pay scale benefits. And we are very sure all our problems and all to patience, perseverance, and sustained effort. We should not lose our morale. We should not lose our hope, and we will definitely succeed. Sir, thank you, Director HR, sir, for accepting our invitation and giving us an opportunity to listen to your views. We are also having Sri A.M. Gupta, sir, Senior GMSR, who is basically the bridge between the unions and association and management. And I don't have any apprehension or hesitation in saying that he is a person whose smile always does his job. With his smile, he has the capacity to tone down even the discussions which are sometimes happening in highest decibels. Thanks, sir, for all your efforts in establishing a balance between employee and the employer. We look forward to a positive relationship, firm relationship between management and executives, between management and employees, positive and faithful faith in each other, belief in each other, and cooperation with each other. Together we will take BSNL to once again its pristine glory, sir. We assure you, we are always there with management in the best interest of our company. We all know that we are passing through a very tough situation, but we also know that when the going gets tough, only the tough gets going. And friends, we all need to exercise this mantra. We all need to be tough. We all need to be strong. We all need to be perseverant. We all need to be focused on our aim. Focused, not in the sense of our HR issues, focused in the sense of achieving the responsibilities which has been extended to us, achieving the effort, achieving the output which has been entrusted to us, fulfilling the expectations which department is having from all the executives. And we know that we are having the largest stake in this company, being all of us will be there for around 15 to 30 years, and we simply cannot let lose anything. Yes, we should not be discouraged with the tough situation. We should not be discouraged with adversities. We all need to exercise patience, and we all need to simply apply one mantra: do the responsibility which has been assigned to you. Whatever has been extended to you, you need to execute that by any means. You need to work, you need to be ready to work for 24/7, because if we fail in our responsibilities, if we fail in our assignments, then definitely we don't have anything to say before management, provide us this or provide us that. Obviously, BSNL will provide whatever it has, and it will have only if we all will work, and we all will work beyond our capacity, beyond our potential. We need to extract 200% out of ourselves, and I request all my friends to understand this fact and work for the betterment of our beloved company. At the same time, being a leader of the executive side, I would definitely expect that it's high time that pending HR issues of executives should also be given suitable attention, suitable thrust, and suitable investment also. So today is and in cutthroat competition, we need to be competitive enough, and to be competitive, to be most efficient, obviously HR needs to be considered as a resource. And if it is a resource, definitely it needs an investment also. It needs an investment not for wastage, it needs an investment to derive
the profitable output in the form of greater efficiency, greater work potential, and greater efficacy. I'm very sure, sir, with such a good team in place at management, with our association in forefront, we are definitely going to achieve everything. We have a firm faith and belief. I request our honorable management representatives to consider the benefits of pending benefits, I would say, which has been pending for long, like a standard pay scale issue, pay loss issue, even +5 increments are pending for very long. 30% superannuation benefit issue is there. These are all having financial implications, and we do understand the constraints which company is facing. But sir, we request, as and when situation permits, definitely management should take a. As far as promotional issues are concerned, definitely with our discussions, we are very sure that output will be there. We are very sure that very soon we will be achieving our objectives, and we assure you that we will make all our executives understand the difficulties, understand the problems, so that whatever you decide, it moves ahead in a cohesive and in a good manner. Thank you, sir. Thank you once again for being here, for leading us to, for leading BSNL once again to its pristine glory. We assure all our cooperation. At the end, once again, I would request all to be patient, to have faith in the system, then only you extract the benefits, maybe in form of HR issues, which may be in the form of pay, perks, everything. Yes, you may say sometime that as an association, we are more believing on discussions, we are more believing on perseverance. But believe me, AIGTO CHQ is fully committed to resolve all the issues of executives and is prepared to take all the steps which are necessary for securing our due benefits. But we are working in difficulties, and accordingly we are exercising our steps, and we look forward for the resolution of all the issues. I, on behalf of my on the work which BSNL has entrusted to you, on the responsibility which BSNL has given to you, and leave the worries of your HR issues to your association, your beloved association. We will be pursuing each and every issue, be it small, be it large. You simply concentrate on your job so that BSNL extracts the maximum benefit out of it. I know the time is very less and I won't take much of time. So finally, I declare this session as open. The theme of the open session is BSNL 2.0, the roadmap ahead. We all will listen to the views of our top management, which includes our CMD BSNL, which includes our Director HR, which includes our Senior GMSR, on all the burning issues of BSNL, be it technical, be it organizational, or be it HR issues. I'm very sure it will give all of us a wonderful opportunity to have the insight on the roadmap ahead with respect to BSNL 2.0. BSNL 2.0, I'm mentioning the word because definitely it's BSNL 2.0. After VRS, it needs to be a changed BSNL. It needs to be a vibrant BSNL. It needs to be a growing BSNL. And we all will utilize this opportunity to take this BSNL once again to its greatest height. Thank you, sir. Thank you all. Jai AIGTOA, Jai BSNL, Jai Hind. Thank you. Thank you, Ravi ji, for such a wonderful welcome and speech and brief of the entire AGM and the BSNL scenario. And now, since you are also the chairman of this meeting, now I formally hand over this meeting to you to carry forward from here onwards. Thank you very much. Over to Ravi Shilji. Thank you, Vasiji. Without taking much of time, we have one of the most wonderful personality of BSNL amongst us,
who is the father figure of this company, father figure not in terms of age, but father figure in terms of the custodian of our beloved organization, BSNL. I would welcome our Honorable CMD, Sri P.K. Purwar sir, for enlightening all of us with his views, with his expectations from employees, with a brief future roadmap, whatever BSNL is having from here onwards. Sir, please, I request you to address the gathering, sir. Thank you, sir. Very good afternoon to all of you. Ravishil Verma ji, President of All India AIGTO, Mohammad Wasi Ahmad ji, General Secretary, my colleague Director on the board, Arvind Vadnekar ji, AM Gupta ji, GMSR, and many officials of AIGTO, many BSNL employees who are listening through YouTube or other channels. So I welcome all of you and thank you very much for giving me this opportunity. Before I start my address, I first of all like to congratulate AIGTO for being recognized and declared as a recognized association. It's a good achievement, and we think that when the organization is moving to the younger path, the younger leaders should emerge in the system and they take the charge of the system to take it forward, because that will reflect the aspiration of the people, that will also reflect the aspiration of the future, how the organization should move forward. So I hope so that my young officers will not only take their personal views and personal expectation from the organization, but they will also work what the BSNL should be from 5 years down the line, 15 years down the line, or 25 years down the line, because they both have the time, vision, as well as the opportunity, what should be the BSNL should be, because the realm of affairs is with them. The success of BSNL will also be with them. And if it is not so successful, I will say the issues which will be required and originating because of that will also be required to be addressed by them. So first of all, my congratulations to each one of them for such a grand success, for being declared as a recognized association. Friends, today's open session theme is BSNL 2.0, the roadmap ahead. I think we all know that BSNL has gone through some very difficult phase. If I look at last 1.5 years of journey of my BSNL, I find when I taken over the charge as CMD BSNL, it was in a very difficult financial state, as well as the operational issues and other thing. And I'm not saying that everything has been overcome. We have addressed certain issues, and many of the issues we have to address. As we all know, we were not having even the money to make the payment of the salary. We are not able to make the payment of the many of the employees reduction which we have done. In the field, the officers and the staff was not able to take the work from the our outsourced manpower or to the contractors, because we are not able to make the payment of them for months together. So it was a very difficult scenario in which we are placed. Our earning was nearly 1,500 crore. Our expenditure happens to be nearly 2,300 crore to 2,400 crore. So there was a gap of 700 crore to 800 crore, which the BSNL has to bridge it. So only source before us was the taking the loan and taking more burden in terms of servicing the loan and servicing the interest cost. Perhaps the revival package has given in one opportunity. And that's why I'm saying the theme of the today's is BSNL 2.0. That means the approval of the cabinet for the revival of BSNL is the new beginning for all of us to chart out the new journey and new path for BSNL. What that journey is, what we achieved in this road path which we have traveled so far, what kind of challenges are there, and what lies ahead of all of us. I will like to take up some of those issues. So far as the journey, when we started the journey from the point of the sanction of the cabinet regarding the revival plan of BSNL. In this journey,
There are many milestones which we have to achieve. Up to this point of time, 2 milestones we are able to achieve. Number one, a very successful VRS. When I say very successful VRS, no management can take the pride that so many people has left the organization. And I'm saying it with very responsibly that as a management, we never look forward that so many people should leave the organization. That cannot be the motive of any management. There are difficult choices has to be made. That organization, if has to move forward, it has to be professional, it should be young, it should be technology oriented, and there should be more professionalism in all ladders of the BSNL. It is not only the top management or medium management, it should be from bottom to the top, the professional has to come. The people who are remaining in the organization, they should make a conscious choice what kind of life they want to selecting for themselves. That means the BSNL 2.0, you have to do a very hard work. You have to sacrifices in many terms because the life is not going to be easy. So we have one aspect regarding the VRS has been completed in which nearly 78,500 people has opted for it. From management side, I will take the satisfaction from only one aspect, that parting 78,500 people in an organization and meeting out their retirement dues and other things in a timely manner was not a small task. As a management, we were apprehensive that we will able to deliver the expectation of our own officials who has opted for VRS. I'm very happy to note that as a BSNL management and the support of all the officers and officials, it's not the top management's outcome, it is the outcome of all the people who have chosen to be with BSNL. They have worked, and majority of the issues of the VRS optees or the retirees, we are able to settle it. Now, as on date, except the ex gratia payment of 8%, which we are also working with the Ministry of Finance, and indication are this amount will be reflected in the revised estimate so that we can make the payment of that and make their parting a successful and satisfactory for all the officials who have chosen to remain in BSNL. That's the one, I will say, as a milestone we have able to reach there. Number two was the bond issue. It is I think, a pride moment for all of us that the market has given the confidence and they have reposed the confidence in BSNL in a very big manner. We always says, it is not the word which counts. It is only when somebody put their money on some project or some organization, it is the kind of faith which they are putting it. So in the BSNL, we have gone to the market with 8,500 crore of requisition. The market has put up more than 17,000 crore as an offer. That is the strength of BSNL. It is not the strength of management. Let I put it very clearly. It is not the success of CMD BSNL. It is not the success of the board of BSNL. It is the success of BSNL as an organization which carries a very strong brand value among its own customers, among the investors and all the people. So I think it is a matter of pride to all of us that BSNL is recognized a very strong organization by the market. So this is the second milestone we are able to move forward. Now, there are some of the issues which are work in progress and some of the issues where we are facing the difficulties also. Since it is an internal forum of BSNL, I should be upfront in conceding certain things where we are not able to move in a desired manner. 4G rollout was the one of the agenda of the BSNL management, that it is the forefront, that along with the VRS, the second most important agenda for the management was the quicker rollout of 4G services. But because of the change external environment, we are not able to move forward, neither on the upgradation nor on the tender. We all are aware that as a management, we work very hard that upgradation get approved and move forward, and almost we have achieved it, almost. But because of the Corona and the
eastern sector and northern sector, the geopolitical movement has made the whole process difficult to take forward. Even on the tender, there are certain issues which has taken the toll on the tender, and still we are struggling the way to move forward. As on date, the mandate from the government, I can only indicate what the mandate of the government as on date is, that BSNL has to go through the proof of concept basis, in which the Indian technology, that Indian core, along with the proven RAN or the any of the RAN from the global player can be there to move forward on the 4G rollout. But this path is not going to give us the 4G in a very short period of time. We require the 4G quickly is a fact, and I fully concede that. But given the conditions and the political decision making, the 4G may take a little bit of time to move forward. So this is one aspect I will say from the management side. We have put it, our viewpoint to the government in a very clear manner, that if 4G is getting delayed, the BSNL required to be supported in terms of spectrum, to be supported in terms of capex infusion, and to be supported into the OPEX, which the BSNL has to incur additionally because of the policy decision of the government. And I have can say there is a consideration of these aspects in the government, that perhaps the BSNL is not being treated equally so far as the other players in the telecom market is there. So BSNL require the support of the government, and the demand of the BSNL to be supported is reasonable and justified. I think this much of consideration has come. Whether it is a discussion in the ETG, or at the level of DOT, or at the level of Honorable Minister, or at the level of PMO, that realization is there that BSNL required to be supported. Now, all I have to say on this aspect, no organization can survive on the doles of any third party. So any desire or any request from our side for support of BSNL is one aspect. But our prime most goal is the rollout of 4G services in quicker manner, so that we should become a robust player in the market. That is the thought process of the management, and that is the goal of the management. We are not here to take the dole of any organization and continue to feast on that. I want that BSNL should become financially viable. It should become independent and respectable organization in terms of financial viability, in terms of market share, in terms of customer. So our goal is very clear from day one, that BSNL will work relentlessly for quicker rollout of 4G services. That's the point number one. So another item which was there is the monetization of assets. In the case of monetization of assets, we have rolled out two very clear agenda before us. Number one, how we can leverage our known core assets, which are non-productive or less productive to us. So in the process of that, we have large number of land, buildings, staff quarters, which require to put on a productive utilization. When I say productive utilization, that means the assets which are partially used by us and partially are vacant, we should put on rental, so that the monetary benefits of that start coming to BSNL. For that, two policy framework we have brought in last 6 months. Number one, the renting policy, in which minimum 25% area in each of the circles has to be identified for renting. And with the 50% of the area likely to be vacant because of the VRS, we have parted nearly 55% of the manpower which was working in BSNL at that point of time. So
parting with the 25% of the area for renting in the very first year is not a challenge. That's number one. We also has to identify the 25% not in a non-commercial areas. What is required? We have to identify these areas in a commercial portion so that they can be rented in the market. So all of us has to work for identification of 25% area and also go into the market and fetch the tenant for the BSNL so that we start earning at least 250 crore of rental revenue in the current financial year. I lay down a path for myself that from today to 5 years, BSNL should earn minimum 1,000 crore from renting of land and building. And friends, we have large assets available with us by which we can achieve it. And when I talk about the rental, we also has to really look at the challenges ahead in the asset management of the BSNL. Now we have large number of quarters which are vacant, large number of buildings we are underutilized. So we will face the challenge of keeping them safe. I will request all of you, all my executives, that 35,000 of my executives and my 30,000 of non-executives should work for protection of each piece of the land and assets of the BSNL, because you are the custodian of these assets. You are the real owners of these assets. Unless until we keep them safe, we will not able to monetize them. So second aspect which we are identified as a part of non-core assets, that we are identifying the land parcels which are not required by us so that we can monetize. In that process, we have already identified nearly 40 land parcels valuing more than 25,000 crore, which can be monetized in next 2 years. Why BSNL want to monetize? That question will arise in the minds of many people. Friends, we have a loan of nearly 25,000 crore. As a management, if I look at, I require nearly 6,000 crore next year to make the payment of the installments of the loan. That means nearly 500 crore rupees of loan repayment is due every month. 200 crore I have to make the payment of GST, and 200 crore rupees I have to make the payment of interest cost. So out of my earning of 1,400 crore, 900 crore is tied up. Nearly 500 crore is my salary bill. So I have left with no money to invest in CapEx and OpEx. Unless until we have additional resources generated from monetization process, we will not able to service our assets properly and make the investment in the network for future growth. So resources are required by BSNL for twin purposes. Number one, for servicing our network in a good condition. Number two, we have to expand our network. We have to make the investment in our network, whether it's a core network, whether it's a fiber, whether it's a mobile or FTTH business, which is the future for us, or MPLS network or lease line network, because these are the future growth drivers for us. So monetization is a one aspect. Number two, as a journey of core assets monetization, we have identified two main areas which we require and work upon. Number one, tower monetization. And when I talk about tower monetization, I am not looking at this stage that we are going to sell the towers, which are the apprehension which comes in many minds when they talk about the BTCL being activated, that perhaps the government or the management is working for sale of the towers. No, we are not working for the sale of tower. What I am trying to work as on date, that tower renting need to pick up. We have nearly 68,000 towers and we have only rented out 13,400 towers, which is nearly 20% of my towers are being rented out. If I able to rent out all my 100% tower, that means 68,000 towers, I will be able to generate nearly 5,000 crore annual revenue additionally, out of which nearly 3,000 crore will be the reimbursement of expenditure
and 2,000 crore will be the rental income which I will be generated. So friends, if I look at today, there is a potential for BSNL. If I improve my tower uptime, if I improve my tower saleability, and there is a full commitment by each one of us in the chain of command, from CMD to my telephone mechanic, that we will give good quality of service to our tenants, then we have a market potential of generating a revenue of additional 5,000 crore. Today I am generating 1,000 crore. So 5,000 crore of additional revenue potential is sitting before us. So as I said, my friends, there is a potential of 5,000 crore of revenue generation from tower assets and 1,000 crore of revenue generation from renting of assets. And these are the money. If we are able to generate 20% of this target each of the subsequent year, 20% in first year, 40% second year, 60% in third year, then our vision of BSNL 2.0 will start fructifying. And friends, when I talk about BSNL 2.0, my vision is only 3. Number 1, we should become a significant players in mobile market. Today, we are less than 5% player in the market. Let my numbers, when I talk about, people will say, no, we have 10.41% market share. No, friend. These are the HLR number. If I look at my actual VLR number, we have nearly 6 crore subscriber base, which is nearly 5% of my total market active share. If we want to be a reasonable player in telecom market, we have to acquire 20% market share, and 20% market share cannot be acquired unless until we make 2 very important decisions for ourselves. Number 1, we have to change ourselves. Only being a technical organization, we have to become a techno-commercial, sales-driven organization. Each one of us, not only to be a technical powerhouse of BSNL, but we also start thinking of each of our decision and each of our actions, they should be techno-commercial beneficial for BSNL. That's the point number 1. Number 2, success of BSNL will not only come on the basis of network quality. It will come with good technical network quality plus drive to sell the BSNL products. Each one of us has to become ambassador of sale of BSNL. We have to change the focus of BSNL only from maintenance of services. We have to commit our resources towards the sales. We have to commit our resources to become ambassador of BSNL for customer delivery. So friends, BSNL 2.0 is based upon one very clear goal, that mobile services, we have to achieve a 20% market share, for which the action plan, number 1, the quicker rollout of 4G services. We have to maintain the technical parameters and uptime and QoS of the network. Number 3, techno-commercial ability and acumenship has to be acquired by each individual in the organization. And 4th, we all has to become the ambassador for sales of BSNL product. Good products are sold in the market, but even not so good products are sold by the strength of the marketing and the drive of our own people. So friends, I will request today each one of you kindly become the ambassador of BSNL sales. Please start working in your level, at your organization, at each of your station, each of your unit, BA, SSA, circle, that BSNL has to transform through you to become a recognized sales force. That's the point number 1, which I want to say. Number 2, I also like to say the FTTH is one business in which we have made a good progress. Very recently, we have acquired 1 million customer, is a very big achievement.
in very difficult time and challenging times for BSNL. From 3.5 lakh of customers, we have moved to a 10 lakh customers, and we are adding nearly 80,000 to 90,000 customers on monthly basis. We have to scale it up to 1.5 lakh customer in next financial year. That means we have double the rate of acquisition of customer, for which we have to not only improve our ecosystem of partners, that's number one. Number two, we have to strengthen our core network. Number two. Number three, the fiber maintenance philosophy has to undergo a very transformational change in BSNL. As on date, what we see when we interact with the private players, they have the target every fiber fault has to be attended within 4 hours. They look at the network uptime of 99.9. Our network uptime is nearly 90%. There are the circles in BSNL which are achieving more than 99%. And this has been achieved by your members and other officers and other staff. So I will particularly like to recognize the contribution of many circles. Very good practices are there. Number one, Kerala. Number one, numero uno circles which are performing. Number two, level I will like to take the name of HP, Punjab, which are the circles, despite many difficulty, they are also consistently maintaining the uptime of more than 99%. And there are many other circles which are more than 97, 98. I don't want to take the name of each of the circles here, but it doesn't mean that I am belittling their performance in that. So all the circles which are able to achieve more than 97, 98%, I like to salute to all the members of them. But all the circles where we are not able to achieve, the management, the staff, the officers has to work together to achieve it 97%, 98% network uptime in fiber. For that, a little bit more dedication is required at all fronts. The FRT has to be created. The FRT teams has to be come out of their houses before 8:30 so that the full day of broad daylight should be available to attend the faults. So network uptimes, media, and backhaul. These are the mantras for us to take forward of fixed line business to a newer level. Number three aspect is our enterprise business. Friends, our enterprise business is going to be under tremendous kind of a pressure in coming days. With the Geo becoming aggressive in the enterprise business, we have to up the ante in the game. And when we talk about this leadership position to be retained, we have to work three fronts. Number one, network uptime. Number two, customer engagement. Today in the BSNL, we have very few people who are doing the customer engagement. And ultimately, we can drive the new business only when there is strength of relationship with our customers. So friend, this is the time when each of us has to become the account manager of 1, 2, 3 of the customer so that their grievances are addressed from a single point. Third, newer ideas has to be built upon, newer methodology of sales has to be identified. So the goal for all of us is very clear that enterprise business has to be moved. Number one, investment and QS parameter. Number two, customer engagement and giving a customized solution so that BSNL should not be perceived only a technical organization. It should be a solution provider. It should be a end-to-end services delivery vehicle to our customers. All these things cannot be achieved unless until we have a vibrant human resource policy. All these things, whatever we talk about, is running from a single chain. That is motivated workforce, the desire of each of the employee to give the best in the organization. That is the motto the management look at very clearly.
But when we talk about, please look at the situations in which we all are placed. It is not that the management do not want to do A thing or B thing or C things. It's not true. But we all are placed in a very difficult situations. The choices are required to be made. Choices before me is very clear. What are my priorities? For my priorities, as on date, keeping the BSNL ship steady is the first choice. And then taking a baby steps to take the organization forward from a static position to a momentary position, so that it is start getting the momentum. Many steps we have taken in the past, and I will like to recognize the roles which have been played by all the BSNL staff and unions and association. Post VRS, stabilization of network is one area. I like to salute each one of you and all the BSNL officials and staff. Wonderful job has been done by you and your members. Because of that, today we are seeing the green shoots of moving the BSNL 2.0. If it has not been stabilized and network would not have been put in a great shape, then perhaps that ship would have been in a great turmoil. So my recognition, my appreciation, my salute is to each one of you for playing a critical role in stabilizing the ship in the post-VRS. Management has also taken various steps. We have reorganized unrequired non-territorial circle from 20 circles. We have reduced to 9 circles. BA reorganization has been done. Manpower planning is in the final stage of putting into place. We expect in this calendar year, we are not talking about financial year, in this calendar year, the manpower planning will also be completed. At the level of GMs, almost 75% work has been completed. We will planning to do it. The norm should be put in place so that this activity of manpower planning is also completed, at least on the policy front, by this calendar year. Some of the positive steps has been taken from our side is regarding the implementation of e-office, so that the process of decision making become faster, more transparent, and more responsible. And I think in the corporate office, we are finding it, the decision making has become quite fast, because once the file is in your e-office, you cannot sit over it. So I will request all of you in the field also, all BA, all circle, we take the target in this financial year, e-office will be 100% should be implemented at all levels, and physical file movement in the BSNL should be stopped. And it will help to take forward. When we are coming to the end of this calendar year, there are many things which we should feel proud. And one of them is the successful completion of Kenny project. Huge work has been done by all the people. Even in the point of COVID, we are able to move forward on a very positive framework. Friends, before closing my address to all of you, I will like to give a comfort on 2 aspects. Number 1, BSNL 2.0 will be what you people desire and what you people make it. Management can only play the catalyst role for putting the basic structure of it. Management cannot make BSNL 2.0 by its own effort only. It requires the commitment, the participation, the vision of 65,000 employees and officers to take it forward. And my vision of BSNL 2.0 is very clearly in my mind. It should be a vibrant organization on the strength of technical leadership by BSNL, which is focused toward the customer delivery, with a passionate engagement on sales front and customer interaction point of view. And all these require some of the issues which have been raised by Ravi Sheel regarding the HR issues. Friends,
management is very focused on those issues. Some of the issues are regarding promotion. We are working upon that so that the promotion issues at all levels get resolved in an amicable manner. But all of us has to understand that we have a legacy in the system, which is more than 20-year, 25-year, even 30-year-old, which need to be dealt within the process with respect to that. But management is ready to work along with your association and other stakeholders to find a solution in a positive manner. Number two, we look forward from BSNL management point of view, active participation for making the BSNL a successful organization. And it is not possible by the wisdom of 1 people or 5 people in the board. It is possible when your suggestion, your active participation will be there. And participation is not only in terms of giving the advice, but also giving the path for execution and executing on the ground level for desired outcomes. So I'm looking forward your suggestion, your participation in forming the vision of BSNL 2.0, as well as leading the charge as a young officer for execution of it. The flag of BSNL is the hands of young officers, and we look forward that we as a management should provide the only visionary leadership from our side as per the vision which comes through a participation process and laid out the execution mechanism which should make the BSNL successful. When I conclude it, I will say, and again, BSNL 2.0 cannot be formed on the basis of the expectation of the support and सर वासी सर थोड़ा बोलिएगा सर, सर का आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट मैं जाके बोल के आता हूँ। सर लगता है सर डिस्कनेक्ट हुआ सर, कुछ क्वेश्चन वॉच की वेटिंग रूम में दोबारा से रिकनेक्ट होंगे। बाकी लोगों का वीडियो आप वेट करते रहो। अजय कर्नाटका वीडियो ऑफ कर देना। Friends, my connectivity, some issue was there. So from my side, thank you all of you, because I have come in the Director HR room. So thank you all of you for inviting me and giving me the opportunity to share my thought process to all of you. And at the last, I would like to assure that management is alive to the expectation of each one of you, and we will work collectively to find the solution of all the issues which are before us. So thank you very much for giving me the opportunity to speak in front of you. Thank you. Thank you, sir, for addressing this August gathering and giving so much of time and explaining all the issues. We are very much thankful to you to attend this session and give your valuable inputs and speech. We are very much hopeful that employee will be get benefited for this through different media we have arranged.
and we are looking forward to work in forward direction, not only on the BSNL issues as well as HR issues also. Thank you very much. Thanks once again, sir. Thank you. Thank you very much. Arvind will be joining to all of you. So thank you very much. Okay, thank you, sir. रवि जी अनम्यूट कर लीजिए. Unmute कर लिया. Thank you, sir. Thank you for the enlightenment given to all of us with respect to the roadmap ahead for BSNL 2.0. Definitely, we all have benefited a lot from this, and we got to know the problems, we got to know the constraints which management is facing, we got to know the approach of management with respect to the various issues. At present, around 16 to 1700 people are listening to this whole gathering. 400 plus are in this room, this chat room, and added to that, around 800 are viewing on YouTube live streaming, and around 400 to 500 are, 450 plus is there on our website. So overall, many people are listening to the views of our top management, and I definitely hope and I assure you that whatever the expectations are from us with respect to our roles and responsibilities, with respect to benefits of BSNL, we the employees will never back out from giving our maximum, giving our fullest. Thank you, sir. Now we have amongst us one of the best personalities, one of the best person who can assume the role of Director HR in the form of Sri Arvind Wadnerkar sir, and all of us are waiting for your speech, waiting for your deliberations, and waiting for your blessings, sir. Kindly bless this August gathering, bless this house with your valuable words. Thank you, sir. I would request, sir, kindly enlighten us with your gracious speech, sir. हमारे माननीय CMD साहब श्री PK पुरवार जी, जो कि अपने भाषण के बाद, अपने एड्रेस के बाद उनको ये जूम की मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा है. कुछ देर तो टेक्निकल स्नैक भी था, और दूसरा उनका MTNL की बोर्ड मीटिंग भी चल रही है. तो हमारे उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने हमको टाइम दिया. मुझे लग रहा था कि शायद वो 10 मिनट का स्लॉट स्पेयर करेंगे, लेकिन वो करीब 25 से 30 मिनट तक उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे सारी चीज़ों को कवर करते हुए, और आप लोगों के भी काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरे करते हुए उन्होंने भाषण दिया. मैं उनका धन्यवाद देता हूँ. और BSNL के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अविनाश गुप्ता भी आज इस मंच में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और रविशील वर्मा जी, प्रेसिडेंट AIGTOA, श्री मोहम्मद वसी अहमद, जनरल सेक्रेटरी AIGTOA, और बाकी सारे ऑफिस बेयरर्स ऑफ AIGTOA और फ्रेंड्स जो जूम मीटिंग के जरिए या यूट्यूब और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो लोग सुन रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार. मैं सबसे पहले AIGTOA को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा. आप लोगों ने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए और अपने आप को एक मेजॉरिटी एसोसिएशन के रूप में, रिकॉग्नाइज्ड मेजॉरिटी एसोसिएशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया हुआ है. और काफ़ी लंबे समय से एक एसोसिएशन जो मेजॉरिटी थी, उनको आपने पीछे छोड़ के आप नंबर 1 हुए हो, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं. पद के साथ जिम्मेदारी भी आती है,
और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके सारे सदस्य जो इस ऑर्गेनाइजेशन के यंग मेंबर्स हैं, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए अब आपको कमर कसनी है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन सीएमडी साहब ने सारा का सारा कवर कर लिया है। मैंने सोचा था कि शायद एचआर के कुछ इश्यूज मेरे लिए छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने उनको भी कवर करते हुए उसको भी उन्होंने बोल दिया है। मेरे पास बहुत ज़्यादा बोलने के लिए अब कुछ रह नहीं गया है। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि बीएसएनएल रिवाइवल के लिए जो 2 महत्वपूर्ण घटक थे, वो था वीआरएस और एक था लैंड मोनेटाइजेशन। 5 में से टोटल 5 थे, जैसा सीएमडी साहब ने बताया था। 2 जो है वीआरएस और लैंड मोनेटाइजेशन, ये डायरेक्टर एचआर के अंडर में आते हैं, जिसमें से आपको मालूम ही होगा कि वीआरएस काफी अच्छे से कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुली क्लोज हो गया है। और जो मकसद था, मकसद क्या था? मकसद ये नहीं था कि लोगों को घर भेजना था। मकसद ये था कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वेज कॉस्ट हमें कम करनी थी, एम्प्लॉय कॉस्ट कम करनी थी, क्योंकि जिस वेज कॉस्ट पे हम लोग थे उतना सस्टेन होना पॉसिबल संभव नहीं था। हम लोग करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए सालाना एम्प्लॉय कॉस्ट के रूप में खर्च कर रहे थे। और 14,000 करोड़ तब तक तो ठीक था, जब तक हम लोग 32,000 करोड़, 31,000 करोड़, 30,000 करोड़ के कंटिन्यूसली ऊपर हम पैसा कमा रहे थे साल में। तब तक 14,000 करोड़, 15,000 करोड़ बहुत ज्यादा माने नहीं रखता, क्योंकि ठीक है वो भी बहुत ज्यादा परसेंटेज है, पर 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू वेज कॉस्ट बहुत ज्यादा अखरता नहीं है। लेकिन ये गला घोटू कंपटीशन की वजह से जो टैरिफ रिवाइज हुआ है हमारा, और जियो के एंट्री के बाद और बाकी सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स ने जिस तरह से अपने टैरिफ को रिवाइज किया है, उसके बाद इवन दो हमारा मार्केट शेयर एब्सोल्यूट टर्म्स में कम न होने के बाद भी हमारा रेवेन्यू बहुत तेजी से कम हुआ है। तो जहां हम लोग 32,000 करोड़ रुपए कमाते थे, वहां से घट के हम लोग सीधे पहले 24,000 करोड़ पे आए, फिर 21,000 करोड़ पे आए, फिर 18,000 करोड़ पे आ गए। तो 18,000 करोड़ का रेवेन्यू और 14,000 करोड़ की एम्प्लॉय कॉस्ट में आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। और इसलिए यह मकसद था रिवाइवल के वीआरएस पैकेज का, कि आप अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट कम करिए। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि जो उन्होंने इतना अच्छा अट्रैक्टिव पैकेज लेके आए, कि जिसमें हमें किसी एम्प्लॉय को कोई प्रोत्साहित नहीं करना पड़ा, किसी एम्प्लॉय को कुछ कहना नहीं पड़ा, बल्कि सभी ने आगे बढ़ के जो लोग अपने जीवन में कुछ और करना चाहते थे, वो आगे बढ़ के आए और उन्होंने वीआरएस लिया। और वीआरएस लेने के बाद फिर हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट 14,000 करोड़ से घट के 7,000 करोड़ पे रह गया। तो वीआरएस का जो मकसद था आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट कम करना, वो पूरा हो गया है। इसीलिए गवर्नमेंट फिर से पूछ रहा है कि भाई हम लोगों ने तो वीआरएस पैकेज के अलावा और भी कुछ रखे थे ऑप्शंस, लेकिन अब शायद उन पे विचार नहीं होगा, क्योंकि आपका मकसद एम्प्लॉय कॉस्ट को जिस रेंज में लाना था वो रेंज में आ गया है। तो हम लोग 1,50,000 के आसपास जो एम्प्लॉयज थे, जब ये रिवाइवल पैकेज की बात चल रही थी, रिवाइवल पैकेज का विचार जो है पिछले जुलाई अगस्त से शुरू हो गया था, जो कि जाके पूरा हुआ है अक्टूबर, 23 अक्टूबर को ये रिवाइवल पैकेज आया है। तो अगस्त 2019 में हम लोग करीब 1.5 लाख लोग थे, और रिवाइवल पैकेज के आने के बाद और 31 जनवरी 2020 को रिवाइवल वीआरएस कंप्लीट होने के बाद हम लोग मात्र 65,000 एम्प्लॉयज रह गए हैं। 65,000 एम्प्लॉयज में आज की तारीख में हमारे पास 35,000 नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज हैं और 30,000 एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से अभी आगे आने वाले सालों में रिटायरमेंट होने वाला है,
उसमें 2024-25 के आते आते executives will be more than non-executives, and that is the true telecom organization. टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या हाईटेक इंडस्ट्री है, उसमें हर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव्स हमेशा ज्यादा होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव्स नाम मात्र के होते हैं। तो हम लोग भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट विल बी ऑर्गेनाइजेशन विद मोर एग्जीक्यूटिव्स। ये एक हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था इसका रिवाइवल पैकेज का, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीआरएस के पहले जो एवरेज एज हमारे ऑर्गेनाइजेशन की थी वो करीब करीब 56 वर्ष थी। आई थिंक 56.8 ईयर्स, 56.8 ईयर्स थी। वहां से वीआरएस के बाद ये घट के 48 साल रह गई है। तो एक एजेड ऑर्गेनाइजेशन, एक वयोवृद्ध ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एज, एवरेज एज 56 साढ़े 56 होना, ये सिद्ध करता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा वृद्ध ऑर्गेनाइजेशन है। वहां से घट के हम लोग 48 साल पे आ गए हैं। इसका मतलब एक ट्रांजिशन है एज ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन से एक हम लोग लीन, थिन और यंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ गए हैं। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वीआरएस। सो जैसे मैंने आपको बताया कि रिवाइवल पैकेज के जो दो महत्वपूर्ण घटक थे, वो एक था वीआरएस और दूसरा है मोनेटाइजेशन, लैंड मोनेटाइजेशन। तो ये दोनों ही डायरेक्ट एचआर के अंडर में आते हैं और मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं। एक कंप्लीट हो चुका है, दूसरे पे हम लोग लगे हुए हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो बाकी अन्य 3 क्या क्या है, उनमें से थे सॉवरेन गारंटी बॉन्ड 8,500 करोड़ का, जो कि सीएमडी साहब ने अभी भी आपको बताया कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हम लोग 8,500 करोड़ रुपए चाहते थे और बिड आ गई थी हमारे पास 17,500 करोड़ की। तो हम लोगों को कम से कम इंटरेस्ट पे 8,500 करोड़ रुपए उठाने में मार्केट से कोई दिक्कत नहीं हुई। वो पैसा आ चुका है और वो पैसा ऑलरेडी हाई इंटरेस्ट लोन को चुकाने में खर्च भी किया जा चुका है, ताकि हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाए। ये तीसरा था। चौथा आपको मालूम है 4G, जो कि थोड़ा सा डिले हुआ है और उसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और जैसे कि सीएमडी साहब ने बताया कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हमारी कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की भी है। इसकी वजह से हमें जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन से हमारा 4G आएगा, लेकिन थोड़ा डिले हो जाएगा। दैट वाज द फोर्थ वन। और पांचवा मेरे ख्याल से था मर्जर ऑफ MTNL और BSNL, जिसको भी गवर्नमेंट जिसके ऊपर फिर से पुनर्विचार कर रहा है कि क्या ये समय जब कोविड के चलते हुए और मार्केट सेंटीमेंट के खराब होते हुए और दोनों ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, BSNL और MTNL के ऊपर इतना ज्यादा लोन होने की वजह से, क्या इन दोनों का मर्जर होने के बाद जो कंबाइंड एंटिटी होगी, वो कंबाइंड एंटिटी क्या सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी मार्केट में, इस बात पे फिर से विचार चल रहा है। इसलिए वो शायद आगे जाएगा वो। तो ये रहा पूरा अपने रिवाइवल पैकेज के बारे में। जो लैंड मोनेटाइजेशन है, जिसके बारे में सीएमडी साहब भी जिक्र कर चुके हैं, अब ये लैंड मोनेटाइजेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है। क्योंकि अगर ये आ गया, अगर मैं ये सक्सेसफुल हो गया, जब मैं सक्सेसफुल कह रहा हूं इसका मतलब ये कि अगर हम अपने अनयूज्ड लैंड पार्सल्स को मार्केट में बेचने में सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और अगर हमको इनिशियली इवन 5,000 करोड़ रुपए भी मिल जाता है, तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत अहम सिद्ध होगा। हालांकि हमारा टारगेट करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट सेटअप में के अंदर कोई चीज खरीदना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हमको एसेट को बेचना भी होता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट एसेट्स हैं, गवर्नमेंट लैंड है। कुछ लैंड तो हमारे पास एक लैंड है अलीपुर का, कैलकाटा का। वो लैंड हमारे पास 1857 का है। कैन यू बिलीव दिस?
हमारे पोजीशन में 1870 1858 के उसके पेपर्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब जब नया नया टेलीग्राफ शुरू हुआ होगा तब शायद वो लैंड परचेज किया होगा और तब से हमारे हाथ में है। इतने पुराने पुराने लैंड हैं जिनके की ठीक ठीक पेपर्स हमारे पास नहीं है। वो कैसे एक्वायर हुए थे, किन परिस्थितियों में हमारे पास आए, उन परिस्थितियों के साथ चलते हुए मार्केट में हमको बेचने के लिए गवर्नमेंट से तरह तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए तमाम उसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं। लेकिन हमारा इस वक्त सारा का सारा फोकस इस पे चल रहा है कि हम कैसे भी करके हमारे लैंड पार्सल्स बिकने चालू हों, ताकि एक तो ये है कि हम अननेसेसरीली अपने अनयूज लैंड पार्सल जिनके ऊपर काफी एनक्रोचमेंट चल रहा है, जिनको संभालना मुश्किल हो रहा है, जैसे जैसे हमारी मैन पावर घटती जा रही है वैसे वैसे हम इतनी इतनी अपनी प्रॉपर्टीज को संभाल भी नहीं पाएंगे, उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो उनको धीरे धीरे हम लोगों को बेचना शुरू करें ताकि हमारे पास कुछ पैसा आए। हमारा टारगेट 2021 के एंड तक कम से कम 10,000 करोड़ रुपए कमाने का इस लैंड मोनेटाइजेशन से है, जिसके पीछे मैं लगा हूं। इस वक्त मेरे पूरे वर्किंग आवर्स के 40 से 50% एनर्जी आई एम स्पेंडिंग ऑन दिस। उसके बाद मैं एज ए डायरेक्टर एचआर होने के नाते जो पॉइंट बताना चाहूंगा वो ये है कि आपके लॉन्ग पेंडिंग जो एचआर इश्यूज हैं उनको मैं कैसे एड्रेस कर रहा हूं। तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आपके जनरल सेक्रेटरी और आपके जो टॉप ऑफिस बेरर है इंक्लूडिंग रविशील वर्मा, इनको मालूम होगा कि हम लोग इस पे कितना काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से नए पीजीएम पर्स ने ज्वाइन करने के बाद ऑलमोस्ट 70 to 80% टाइम उनका केवल इसी मुद्दे पे जा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज्यादा लीगेसी इश्यूज हैं जो कि सीएमडी साहब ने बताया था, और बहुत ज्यादा कोर्ट केसेस और बहुत सारी चीजों का हम लोगों को खतरा रहता है। उन सबको काउंटर करते हुए, उन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों का प्रमोशन कितने जल्दी से जल्दी हो, इस बात की हमारी तैयारी चल रही है। और मैं आपको अश्योर करना चाहूंगा कि अनलेस एंड अनटिल एकदम से हमारा मतलब क्या बोलते हैं, किस्मत ही अगर हमारा साथ ना दे या होने को ही मंजूर ना हो तो बात अलग है। अदरवाइज मैं आपको अश्योर करना चाहूंगा कि हम लोग आपको डेफिनेटली आपकी जो लॉन्ग पेंडिंग ड्यू प्रमोशंस है वो प्रमोशन दिलाने में सफल हो जाएंगे बहुत निकट भविष्य में। ये मेरी कोशिश है और मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फिर भी आई एम स्टिल कीपिंग माय माउथ शट एट दिस मोमेंट कि जब तक हो ना जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। जब तक आप लोगों को मैं ऑर्डर न दे दूं, जब तक आप लोग ऑर्डर न ले लें और आप देख न ले अपना नाम, तब तक ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसलिए अभी कहना कुछ उचित नहीं होगा, लेकिन हमारी एंटायर टीम जो है इस पे लगी हुई है, इसकी पूरी कोशिश कर रही है। ये बीएसएनएल का जो भविष्य है वो आप ही लोग हो, आपको ये बात अच्छे से मालूम है, क्योंकि जो एडीटी लेवल का जो रिक्रूटमेंट था वो बीएसएनएल के फॉर्मेशन के बाद यूपीएससी ने किया नहीं है। हमारे पास कोई यंग मैनेजमेंट का इनटेक नहीं है। सो ऑल दीज यंग एग्जीक्यूटिव्स, आप लोगों में से ही आप लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके संभालना है। इसका ट्रांजिशन कैसे हो, इसके ऊपर भी हम रोड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जैसे कि सीएमडी साहब ने कहा था कि जितने चैलेंजेस हमारे सामने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लाने के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करने के लिए, उसके लिए वर्क फोर्स को मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको मोटिवेट कैसे करूं, ये इसकी हमारी पूरी कोशिश चल रही है, क्योंकि
one of the most important works of any director HR is to see that its workforce is kept motivated. आप लोगों को टेक्नोलॉजी में नई नई ट्रेनिंग के बारे में मैं सोच रहा हूँ, जो ट्रेनिंग के ऊपर हम लोगों ने काफी समय से कुछ पैसा खर्च नहीं किया है या रिसोर्सेज खर्च नहीं किए हैं या इवन बिना खर्च किए भी आप लोगों के ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए हैं, उसके ऊपर मैं फिर से रिन्यूड एफर्ट्स कर रहा हूँ ताकि हमारा यंग वर्कफोर्स मोटिवेट रहे और जो डीमोटिवेशन के पुराने कारण हैं उनको दूर करने का प्रयास चल रहा है। तो ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे अपने टेन्योर में मैं आपको एचआर की कुछ ऐसी पॉलिसीज दूं जिससे आप डेफिनेटली मोटिवेट होके इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में डेफिनेटली कामयाब होंगे। मैं देख रहा था कि इसकी थीम आपने जो लिखी हुई है BSNL 2.0 स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग 2000 करोड़ रेवेन्यू पर मंथ। 2000 करोड़ रुपए रेवेन्यू पर मंथ का मतलब है 24,000 करोड़ रुपए सालाना। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप हम लोग 2000 करोड़ रुपए पर मंथ कमाएंगे या 24,000 करोड़ रुपए सालाना कमाएंगे तो नॉट ओनली एबिटा प्रॉफिट, जो कि अभी भी हम लोगों ने पिछले 6 महीने में अभी आपने सुना होगा कि करीब करीब 620 करोड़ से हम लोग एबिटा पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन एबिटा के बाद बहुत जो दो बड़े कंपोनेंट्स आते हैं वो है एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट और दूसरा अमोर्टाइजेशन एंड डिप्रिसिएशन वगैरह आता है। वो दोनों खर्चे न होने की वजह से हम लोग एबिटा पॉजिटिव इस फर्स्ट हाफ में रहे हैं 2020-21 के हम लोग फर्स्ट हाफ में 620 करोड़ से एबिटा पॉजिटिव रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग 2000 करोड़ रुपए पर मंथ कमाएंगे तो आई एम वेरी श्योर कि हम लोग नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे। 24,000 करोड़ रेवेन्यू अगर हमारा जिस साल आ जाएगा इसके बाद आई एम वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू बी इन नेट प्रॉफिट। तो आप लोगों का जो 2 दिन का विचार मंथन होने वाला है, इस पे आप खूब कस के विचार करिए कि हम लोग 2000 करोड़ रुपए महीना कैसे कमाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं 1500 करोड़ रुपए कमाने में। तो इसका मतलब है कि आप 500 करोड़ रुपए पर मंथ एडिशनल कमाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस कॉम्पिटिटिव इरा में, इस भीषण परिस्थिति में, इस गला घोटू कंपटीशन में 500 करोड़ रुपए हर महीने एक्स्ट्रा कमाना ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप इस पे विचार करिए। आप लोग मैं देख रहा हूं इसके बाद से जब से आप लोगों का नया ऑर्गेनाइजेशन जीत के आया है या इवन उसके पहले भी आप लोगों के जो रिप्रेजेंटेशंस होते थे, जो आप लोगों के लेटेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस में आते थे, वो अपने एचआर इश्यूज के अलावा आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं उनके बीच में काफी गांभीर्य है, काफी सोच है उसमें, और काफी आप लोग ऐसा लग रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए या ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ाने के लिए आप बिल्कुल अंदर तक इन्वॉल्व हो। तो आप वो करिए और उसके बाद डेफिनेटली आपके इन 2 दिन के विचार मंथन के बाद जो आपकी तरफ से मैनेजमेंट को सजेशंस आते हैं उनको पुट फोर्थ करिए और जो भी इम्प्लीमेंटेबल सजेशंस होंगे वो हम इम्प्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि रविशील ने कहा था, तो मैं भी एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये जो नया बोर्ड आया हुआ है, एक मात्र कमी हमारे डायरेक्टर फाइनेंस की थी, वो भी पिछले महीने डायरेक्टर फाइनेंस भी अपॉइंट होके आ चुकी हैं। तो एक तो पहली बार बहुत सालों के बाद एक फुल बोर्ड बना है। अदरवाइज अभी तक ऐसा हो रहा था कि कोई ना कोई डायरेक्टर के पास एडिशनल चार्ज था या कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर वाज लुकिंग आफ्टर द ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अब पहली बार ऐसा है कि 5 फंक्शनल डायरेक्टर और एक CMD फुल फ्लेजेड बोर्ड बनके तैयार है। और ये बोर्ड मैं आपको बताऊं दिन रात मेहनत कर रहा है BSNL को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में, इसको रिवाइव करने में। आप इस बात का अपने मन में कतई डाउट मत रखिए कि मैनेजमेंट की तरफ से इस ऑर्गेनाइजेशन
की दशा बदलने में कोई भी कसर है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी मजबूरियां होंगी। अदरवाइज मैनेजमेंट की तरफ से कोई कसर नहीं है। ये बोर्ड फुल्ली डेडिकेटेड है आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए, एक यंग वर्क फोर्स को और आगे बढ़ाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए और बीएसएनएल की दिशा निर्धारित करने के लिए। मैं आपको, आप जिन लोगों को मेरा वीडियो दिख रहा है उसके पीछे मेरा बोर्ड भी दिख रहा होगा, एक नोटिस बोर्ड लग रहा है, नोटिस बोर्ड नहीं है पर मेरा एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। उसमें भी हम लोगों ने सारे जो गुणा भाग और जोड़ घटाने किए हुए हैं वो सब आपके प्रमोशन के लिए मेहनत जो कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, जिसको किसी को दिख जाए तो। सो वी आर डेफिनेटली फॉर योर लॉन्ग पेंडिंग प्रमोशनल आपके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। पर ये बात उतनी ही सही है कि हम लोगों ने काफी लंबी इनिंग हम लोग खेल चुके हैं। हम जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं वो 30-30, 35-35 साल की सर्विस करने के बाद यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों का बहुत बहुत बड़ा भाग जो है, अधिकांश भाग हमारा निकल चुका है। आप लोग ऐसे हैं जिनको, जैसे कि मेरे ख्याल से रवि ने बताया था कि किसी की 15 साल या शायद वसी ने बताया था, किसी की कम से कम 15 साल से लेकर 30 साल तक की लोगों की सर्विस इस ऑर्गेनाइजेशन में बाकी है। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और भी, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट और भी ज्यादा होना जरूरी है। और ये बात तो पक्की है कि आपका भविष्य या हमारा भविष्य ऑर्गेनाइजेशन के भविष्य से टोटली लिंक्ड है। ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉस्पर करेगा तभी हम लोग प्रॉस्पर कर पाएंगे। इसलिए जैसा कि सीएमडी साहब ने कहा था कि टॉप मैनेजमेंट को या ऊपर वाले मैनेजमेंट को ब्लेम न करते हुए आपके हाथ में जो कुछ है उसमें आप और ज्यादा मेहनत करें। और हर आपका एग्जीक्यूटिव अगर डिसाइड करे कि मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट से अगर मैं थोड़ा बहुत भी एडिशनल रेवेन्यू कमा पाता हूं तो ही आपका ये ऑब्जेक्टिव जाके पूरा हो पाएगा। क्योंकि 2000 करोड़ रुपए कमाने के लिए कोई भी जादू की छड़ी नहीं है कि हमने जादू की छड़ी घुमाई और आपको एडिशनल पैसा बरसने लगा। इतना आसान होता तो हम लोग इस हालत में आते भी नहीं। हमको एक एक कस्टमर के पास जाके उसको अपने साथ जुड़ाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और कस्टमर अगर हमारे साथ जुड़ा रहेगा तो उसके जेब में से 4 पैसे हम और ज्यादा भी खींच ला पाएंगे, आज नहीं तो कल हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन कस्टमर जाते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि कोई कस्टमर के जाने से कोई भी कंसर्न नहीं है तो बात ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि मैं हमेशा अपने मोटिवेशनल स्पीचेस में बोलता हूं कि व्हाई डू कस्टमर्स लीव, कस्टमर छोड़ के क्यों जाते हैं। इस बात का सर्वे हुआ था और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 60 to 70% customer they leave the service provider or they leave any organization or any store also for that matter when they feel that they were not treated properly। मतलब आपको लगता था कि आप अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे हो, टेलीफोन डाउन रहता है, ब्रॉडबैंड चलता नहीं है, स्पीड कम मिलती है, एफटीटीएच काम नहीं कर रहा है, इसलिए कस्टमर छोड़ के जा रहा है। नहीं, 60 से 70% कस्टमर्स इसलिए छोड़ के जाते हैं जब उनको लगता है कि बीएसएनएल ने उनको केयर नहीं किया, किसी ने ढंग से बातचीत नहीं की, किसी ने उनको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया। और मैं ये बताऊं, ये काम करने के लिए आपको किसी भी एक पैसे की भी जरूरत नहीं है। जस्ट बाय अल्टरिंग योर एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर कस्टमर, just by showing that you need them, you are so much concerned about them, और उनके जाने से हमको फर्क पड़ता है
ये बताना, ये उनको एहसास दिला पाना बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता रहा हूँ उससे कस्टमर नहीं जाएगा। तो जब तक हम लोग आपके लिए और ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी वाली चीजें बेचने के लिए लेके आते हैं, तब तक आपको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में ही कैसे अच्छी सर्विस बनाए रखनी है, इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। Each one of your executives have to work harder for this, कि मैं कैसे अपने कस्टमर को थोड़ा और सेटिस्फेक्शन दे पाऊं जिससे वो मेरे से जुड़ा रहे। हमारा, आपका और बीएसएनएल का भविष्य टोटली हमारे कस्टमर्स से लिंक्ड है, चाहे वो रिटेल कस्टमर्स हो या एंटरप्राइज कस्टमर्स हो। वो रहेंगे तो ही हम लोग कुछ आगे सोच पाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी मेरा जो ड्रीम है या मेरा जो सपना है वो ये है कि आपका जो यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव रहे इस वक्त, दैट यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव शुड आल्सो रिटायर फ्रॉम बीएसएनएल इन सुपरएन्यूएशन। मींस इस ऑर्गेनाइजेशन की 2 साल की, 5 साल की या 10 साल की विजिबिलिटी नहीं हो। इस ऑर्गेनाइजेशन का रोड मैप ऐसा होना चाहिए कि जिस आपके यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव जिसके आज की तारीख में 25 से 30 वर्ष बचे हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से सुपरएन्यूएट होके जाए, तब तक हमारा बीएसएनएल प्रॉस्पर करे कम से कम। और आई एम वेरी श्योर कि अगर तब तक चल गया तो डेफिनेटली इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रॉस्पर होकर आगे और उत्तरोत्तर प्रगति करता ही जाएगा। तो साथियों, आप मायूस ना हो, आप निराश ना हो। एक 100% ऑनेस्ट बोर्ड आज बीएसएनएल को उपलब्ध है और वो ऑर्गेनाइजेशन के और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के भले के लिए कंटिन्यूअसली सोच रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आपको लग रहा होगा कि रिजल्ट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली देयर आर कॉन्स्टेंट्स। बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारा हमारा एक सेटअप है और गवर्नमेंट का। आफ्टर ऑल हम लोग 100% गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा मालिक है। अगर हम उनसे बोलेंगे कि भाई हमको फुल फ्रीडम दे दो, फुल आप हम पे क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाते हो, जियो को क्यों नहीं कहते कि मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया कंपलसरी करो, तो हमसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जियो के रिवाइवल के लिए या वोडाफोन के रिवाइवल के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं हम लोग आगे। अल्टीमेटली उन्होंने रिवाइवल पैकेज निकाला किसके लिए? रिवाइवल पैकेज निकाला बीएसएनएल के लिए। क्यों निकाला? क्योंकि बीएसएनएल उनका बेबी है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। वोडाफोन को डूबते हुए देख रहे थे तब तो नहीं आया आगे वो, या तमाम टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई हैं, उनको बचाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं आई। तो जो हमको बचाने आगे आ सकता है उसका कहा हमको मानना पड़ेगा और हमें उनके दिशा निर्देश के अंदर ही काम करना पड़ेगा। इसलिए सारी मजबूरियां हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जिसके के लिए कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं लगता, वो तो हम कम से कम करते रहे। सीएमडी साहब ने कहा था कि आप यंग एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, जो ओल्ड हो गए हैं ना, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। जो 55 के ऊपर के हैं, 58 के ऊपर के हैं, वो जितना कर रहे हैं उतना ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। उम्मीद आप अपने खुद से रखिए जो यंग है, और वो थोड़ा एक्स्ट्रा करें। और वो हमारे जैसे कि उन्होंने कहा कि आप हर अपने जिस सेटअप में आप हैं वहां पर जो इम्पोर्टेंट अकाउंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं, उनको ओन करें, उनके अकाउंट्स मैनेजर बने और इंश्योर करें कि वो पर्टिकुलर अकाउंट आपको छोड़ के ना जाए। अगर मेरे पास एक अकाउंट है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अकाउंट मेरे को छोड़ के जा रहा है तो, और उसको अच्छी सेवा देने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल मेक श्योर कि मेरा टॉप मैनेजमेंट है वो हिल जाए अगर मेरा अकाउंट होल्डर जाने को तैयार है तो। उसको अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही है, उसके फाइबर की लीज लाइन खराब है, उसका एफटीटीएच कनेक्शन काम नहीं करता, उसका एमपीएलएस ठीक नहीं काम कर रहा है,
तो आई विल इंश्योर कि उसकी सर्विस अच्छी हो जाए। ये जब तक हम लोग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक अकाउंट की नहीं लेंगे, तब तक आप उनको अपने से बहुत दिनों तक जोड़े नहीं रह सकते। अगर उनको लगे कि उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज है, कोई सुनता नहीं है, कंप्लेंट कोई को अटेंड नहीं करता, तो वो धीरे धीरे वहां जाने लगेंगे। क्योंकि मैं माइंड यू, आपके जो कंप्यूटर है वो दिन रात उनके दफ्तर के बाहर बैठे रहते हैं और वो साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारन वो उन कस्टमर्स को आपसे छीन के अपने पास लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक हमारा पुराना लीगेसी है, पुराना नाम है, ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से ये कस्टमर हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी उनको ओन करने की और उनको अपने से जुड़ाए रखने की। साथियों, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आपका और इस ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य बहुत उज्जवल है और आपके अंदर में जो भी डाउट्स हो, जो भी मायूसी कभी-कभी आ जाती है, उसको आप दूर करें। आप दत्तचित्त होके और बढ़िया मन से, अच्छे मन से काम करते रहें। हम आपको मोटिवेट बनाए रखने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और सून यू विल सी द रिजल्ट्स। आपको आपके इन 2 दिन के सेशंस के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा और मैं आई एम वेरी श्योर कि आप लोग बहुत कुछ विचार मंथन करके कुछ बढ़िया सा इसमें से अच्छे सजेशन लेके मैनेजमेंट के सामने रखेंगे और मैनेजमेंट आपको अश्योर करता है कि जो भी सजेशन इम्प्लीमेंटेबल होंगे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने मुझे बुलाया और मेरे को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रही हूँ और आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय बीएसएनएल, जय हिंद। थैंक यू सर। आपने अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित किया और आगे का मार्गदर्शन भी प्रदान किया। मुझे पूरी आशा है कि आपके शब्दों के पीछे जो अनकही बातें थी उन्हें भी हमारे लोगों ने अच्छी तरह से समझा है और उस समझ के हिसाब से हम सब आगे बढ़ेंगे और आपको ये पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हमारा विश्वास मैनेजमेंट में अटूट है। सर, एज ए लीडर मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि हमेशा रहेगा, लेकिन जितना हमने अभी तक देखा है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि ये विश्वास आगे भी चलता रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। हमें आपसे पूरी उम्मीद है सर, एंड आई एम वेरी मच श्योर यू विल बी द बेस्ट डायरेक्टर एचआर which this company has ever got, because you have that compassion, you have that thought process, you have that care for your executives। और मुझे रही बात बीएसएनएल की सर, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, रिसोर्सेस कम हैं, लेकिन फिर भी जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, जितनी हमारी ताकत है, हम उससे कहीं ज्यादा इनपुट, उससे कहीं ज्यादा आउटपुट निकाल के देंगे। और बीएसएनएल को ये जो 2000 करोड़ का टारगेट है, हम आशा करते हैं, बहुत मुश्किल टारगेट रखा है, टारगेट हमेशा सर मुश्किल ही रखना चाहिए ताकि जो भी अचीवमेंट हो वो मैक्सिमम पॉसिबल हो। इसलिए हमने सर हाई टारगेट रखा है ताकि एक्शंस भी उतने ही टारगेट ओरिएंटेड हो। देखते हैं सर, जैसा भी हम लोगों का आपके इस ओपन सेशन के माध्यम से और हमारी जो डेलिब्रेशंस का जो भी आउटपुट होगा, डेफिनेटली हम पूरी मैनेजमेंट को अवगत कराएंगे और जो भी आप लोगों को लगता है उसको आप इम्प्लीमेंट करें, हमारी पूरी आशा। और आप लोगों ने पहले भी हमारे सजेशंस को कंसीडर किया है। बस यही ध्यान रखना है सर कि एक एम्प्लॉय के लिए उसकी 3 बातें ही होती हैं। काम पूरा करता है, बदले में वो चाहता है कि उसका पे, प्रमोशन और पेंशन सुरक्षित रहे, और मुझे आपके लीडरशिप में पूरा भरोसा है कि ये सुरक्षित रहेगा। जो कुछ मिला है वो कायम रहेगा, जो कुछ नहीं मिला है वो आगे मिलेगा। थैंक यू सर। और फाइनली एट द एंड सिर्फ एक ही चीज कहूंगा सर कि जितनी जल्दी हो सके हमारे लोगों को थोड़ा बहुत जो आप अभी देने की कोशिश कर रहे हैं वो मिल जाए, क्योंकि सर जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड, ये बात भी सच है, हमें ये भी मानना पड़ेगा। और हमें पता है सर कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और डेट आप नहीं दे सकते हैं, उसकी कंस्ट्रेंट्स भी हम जानते हैं। इसलिए थैंक यू सर, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं और पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने
राष्ट्रीय महासचिव हरदिल अजीज, स्माइलिंग फेस, कमिटेड एंड डेडिकेटेड लीडर, जो कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी, जहां पूरा कोविड का मायाजाल फैला हुआ है, उसमें भी बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस में अपनी कई, एक तरह से कहा जाए तो अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के ही आते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे लोगों को वो अपनी बातों से मुखातिब करें, और हम चाहेंगे कि हमारे डायरेक्टर एचआर साहब को भी वो लोगों के एस्पिरेशंस के बारे में बताएं, क्योंकि एज ए डायरेक्टर, एज ए जनरल सेक्रेटरी, इट इज योर considered duty to make management aware about the aspirations of executives. Vasi ji, please go ahead. Thank you, sir. थैंक यू रवि जी। वैसे बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत ज्यादा अब कहने को नहीं है, और जहां तक सीएमडी महोदय और डायरेक्टर एचआर साहब हैं, उनसे हमारी मीटिंग लगातार होती है, और 9 को लास्ट में काफी डिटेल में चर्चा होती है, क्योंकि हमारे अभी बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, जो लगभग 1500 प्लस की संख्या में है, जो हमारे बीएसएनएल के एम्प्लॉय भी हैं, हमारे मेंबर भी हैं और हमारे मेंबर नहीं भी हैं। सभी की आकांक्षाओं को समेटने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एक्सटेंड माय गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। टुडे आई हैव द प्रिविलेज ऑफ प्रेजेंटिंग the keynote address before the distinguished chief guest and our leader, Shri Praveen Kumar Purwar ji, Honorable CMD BSNL, respected guest of honor, Shri Arvind Vadnagar sir, Director HR BSNL Board, Chairman of the meeting and All India President, Shri Ravishil Verma ji, senior colleague, officers of the BSNL Corporate Office, Shri A.M. Gupta ji, Senior GMSR, BSNL Corporate Office, respected Chairman Shri Lakshman Bhanot ji, Deputy General Secretary Deepak Sahu ji, Finance Secretary Shri Yogendra Jharwal ji, my all CHQ colleagues, all circle secretaries, circle presidents, circle office bearers, collegium members and delegates, and all the executives and employees of the BSNL who are watching this program through different modes of online. I once again extend my deep gratitude to our Honorable CMD BSNL, Shri Praveen Kumar Purwar ji, for attending this session of AIGTO CHQ in spite of his busy schedule. And my special thanks to Director HR Sahab, GMSR Sahab, for honoring our request and attending the AGM on this short notice. Definitely, Director HR Sahab has already touched that aspect, that definitely it is a place of extreme satisfaction that after a long time, BSNL has its full functional board of directors under the esteemed leadership of Shri P.K. Purwar ji as CMD BSNL. And we are very much hopeful that the full board under the esteemed leadership of CMD Purwar ji and the Director HR Shri Arvind Vadnagar ji, we will be successful to turn the tide in our favor, not only in respect of the BSNL, not in the respect of BSNL viability and sustainability, but also in resolving the long pending issues in terms of promotions, pay, and superannuations. First of all, I extend my sincere thanks to all the executive fraternity of BSNL for your love, affection, trust, and support for making AIGTO #1 representative executive association of BSNL and giving us the responsibility to realize your dream for your company and for your career progression, along with your pay loss and superannuation issues and settlement of other genuine HR issues. And we here assure you that we will leave no stone unturned to come on the expectation what you have desired and what you are meant for. Definitely, AIGT will try its best to reach your expectation and try to resolve the HR issue with honesty for all executive fraternity without any bias to any group, and also try to keep our beloved company BSNL as the leading telecom provider in the telecom sector. As in the theme of the today's open session is BSNL to the roadmap ahead. All the distinguished guests has spoken in large
what were the roadmaps, how we are, how we have moved from BSNL 1 to BSNL 2, how the revival package has arrived, what the government has extended the support in terms of five arms, which the Director HR has explained and the CMD has already told in detail regarding VRS bond, 8,500 bond, which we have got collected, land monetization, 4G rollout and merger of BSNL MTNL. Friends, I will not give so much of time. Definitely, whatever we have understood, the delay in 4G rollout is costing too much for the BSNL, and what the target we have said is 2,000 crore per month. Definitely, it has a major role about the earliest implementation of 4G in BSNL, because without 4G and high-speed data services, it will not be possible for BSNL to attain that goal. And in that direction, I am very much thankful, and I want to apprise all of you that our CMD BSNL is deeply involved, and I cannot expect that such a senior officer, he has all the nitty and gritty and all the even technical aspect of this 4G and how the things are moving forward. And he is putting all his best effort to see that the 4G rollout is done at the earliest. But definitely there is some constraint which is coming from the DOT side or from the government side. And we are also committed to ensure that whatever the obstacle and whatever the non-feasibility coming from other outside the department, we will work to resolve that issues from our own platform by joining our hands with our sister association and unions in the larger interest of BSNL. But we will definitely see that this 4G rollout should be done at the earliest possible time, because in today's time, without a high-speed wireless data communication, no telecom sector can survive. And as the CMD Sahab has already told, that it is just 5% of market share. And with 5% of market share, which is the actual share in terms of business, it will be definitely very difficult to sustain for long term, even after getting into BSNL 2. So it is the duty of all of us to see that this one of the most important after VRS, the 4G rollout should be ensured at the earliest, along with the continuity of the 2G services and its related issues. Because still we know that about 65 to 75% of customers in BSNL are depending on 2G, and our revenue is coming from 2G. So we have to see that in continuous of the early rollout of the 4G, the 2G should also continue in BSNL, and whatever the requirement is there, whether it what the spectrum which has expired in February 2020, that should be again reallotted, and BSNL should be given a free hand to reuse this band in 900 megahertz band to reutilize in the 2G or 4G services. Similarly, other issues which are related with the OFC network maintenance issue, copper network and maintenance issue, HR backhaul issue, GSM or CMTNS issue, international gateway bandwidth issue, FTTH issue, MPLS core network issue, BA Bharat fiber issue, DSL broadband issue, and other rental issue, maintenance issue, electricity pending issue, or the pending temporary advance issue, which is running from 1 lakhs to 2 lakhs for the different executive. These are the issues which are related with the BSNL, and we have already apprised in detail to the management that without getting and resolving all these issues in a time-bound manner, it will be very difficult to get the fruit of this BSNL 2. And we are very much hopeful that our CMD is working in that direction. The board is working in that direction, and very soon we will be able to get all these issues resolved in a time-bound manner. Finally, the AGM, and since the association is formed to look after the issues of the executives, and for which we have been recognized, we have been given a chance by the executive fraternity of the BSNL to see that the long pending issue of the executive should see the light of the day, and that is starting from the promotion in various grade which is pending. If I see
The stagnation is coming to 19 years in the case of JTO Telecom. It is coming 22 years in the case of JTO Electrical Civil and Electrical. It is coming in the terms of about 14 years in the case of SD Telecom. It is coming about 12 to 14 years in the case of AO, and similarly in other grade also. So what we want to see that the stagnation should be reduced, and for that sufficient number of vacancies are available, sufficient number of guidelines are available, and we have to, in the present setup only, the management should ensure that all the pending promotion in the grade of SDT, DT, AGM and CO should be carried out immediately. In that direction, we have already discussed in detail with the board, with the CMD and Director HR. They have assured that step by step they are moving ahead, and the JTO to SD promotion are expected to be released very soon. Although we can say that it is not, the various timelines has already failed. So this time the timeline is not coming, but I am very much assured with the commitment and with the direction and with the work going on, this we will achieve very soon. And after that J2 to SD promotion, the promotion in next grade, either it is SD to DT or it is AO to CO or it is electrical or civil, we will move in that direction. We will focus on that direction, that these grades should be focused after this J2 to SD promotion order. And we are very much assured that in a fixed timeline, which we will discuss the next day, we will see that the management should issue the promotion in the grade of AGM, CO and other grades which are acute shortage of officers also in the field units, and sufficient vacancies are also available. This we will ensure, as well as we will see that the SD Sinity list, which has already been published, of list 9 of a vacancy of 6, 7, the further vacancy or Sinity list should be published, so that the promotion in the grade of SD to AGM should be ensured on the vacancy year concept basis. Definitely, since as at present, if I see about 7,500 SDs are working, but many of the SDs are working in the grade of SD look after AGM or interest basis. So what I mean to say that, or we have already apprised to the management that the SDs are already working and taking the responsibility of AGM, and already working the E4 grade. So there is not even any financial burden. They are already discharging. You have to only give them a regular designation, and management has also agreed. And this is also the case of in the case of JTO also, where about 13,500 JTOs working in BSNL and in these 13,500 JTO, about 5 to 6,000 people are already working in the SD grade. They are already getting the higher pay scale also. So it is not a promotion, but I will say that it is simply designation change, because they are already getting a scale, they are already discharging the responsibility, and management has also got understood that these promotion are nothing but simply redesignation to them to the higher post. And they are also agreed that they will look into that one by one, and they will see that your promotional prospect should be ensured in a time-bound manner, and we are hopeful that the new management will see to do all possible steps in this direction. Similarly, the pay loss issue and the standard pay scale issue and the superannuation benefit, these are the three basic issues which are mostly hurting all our youngest executives, because all those people who recruited after 2007-8 in JT or JO grade are losing at least 10,000 plus rupees per month. Similarly, those people who were recruited after 2010 in the JTU and JO grade or promoted in this grade, they are facing loss of 7,000 to 8,000 per month, because after getting due to their initial basic of even 16,400. Whereas all the people have got even +5 increment before 2010. These lots who were joined after 2010 in BSNL in JTU and JO grade, they are getting 16,500 even grade, and for that there are about 5,000
executive, and the maximum burden is about 5 to 6 crore rupees. Similarly, in the pay loss cases, 20 by service case also, it is 5 to 6 crore per month additional burden. We have discussed this issue in detail with the management. And similarly, superannuation benefit, we are getting just 5% superannuation benefit. That is in total, if we will add up, it is 21.8% out of the 30% unmarked for the SAB by the DP. So we have requested management to at least you increase the SAB contribution also from 5% to 8% in one go, and then in further. And a 1% increase requires just 2 crore a month. So if you increase by 3%, this will require another 6 crore rupees per month. So my only submission that these issues which are hurting financially to the executive in BSNL who are working, who are most youngest executive and who are leading the company with the added responsibility of the happening the VRS in the BSNL, where about 78,500 executive have already left the department, where all the works which have been outsourced are non-executive work. No executive work has been outsourced. So the responsibility as well as work has already been multiplied many times. Many new services has been launched. So if we want that BSNL 2 should move ahead, if we want that BSNL 2 should move ahead and earn 2,000 crore of rupees in a stepwise, it doesn't mean from just 15 or 1,400 crore we are jumping to 2,000. Definitely it will move in a step-by-step manner. But for that, a motivated executive force must be there, because as the director HR has told that it should be a department where executive should lead. The ratio of executive and non-executive, executive will be on higher side by 2024. So they also accept that it is the executive driven company, it is the executive driven organization. So we have to see that those executives who are leading this company should be motivated. Their promotion, their pension, their pay scale should be protected, and they should be focused more on their assigned job of the duty instead of focusing more on their resolving the issues. And it is the duty of the management to see that their issues should be resolved in a time-bound manner, and they should be kept motivated, so that these executive and the association should focus more on the BSNL. And we are very much hopeful that it is well in the knowledge of the management. They have considered that these are the issues, and we conceive and we agree that these are the issues. Now we are looking forward how to resolve these issues in this financial stress. And once there will be an improvement in the financial stress of the company, definitely we are going to resolve these issues one by one. That has been agreed by the management, and we are very much hopeful the situation will improve from here onwards. I don't say that, I can't say that these issues are going to solve in 1 month or 2 months from now here onwards, considering the present financial position of the company. But definitely it requires a timeline from the management side also, that the situation should improve and issues should also be resolved. But those issues which doesn't have any financial implication like promotion, that should be implemented in the least possible time. If I say least possible time, I mean to say that this should be done on priority basis by devoting day and nights of the officers who are working in the corporate office, and see that those who are working in the field, their interests should be protected by giving the due promotion, which is lingering not from 2 years, 3 years, but about 15 to 19 years in various grades. So these are the very basic important issues which we wanted to take up here. Since the time is already going toward more than what is our expected timeline given to the management, and so just winding up my speech, I want to summarize some 3 to 4 more points. That some post-retirement medical benefits which are not available to the BSNL recruited employee, which we have already brought to the knowledge of director. The file has already been moved. I hope the director HR has already given a direction, and this will be issued very soon.
EPF final EPF higher pension option scheme, family corporate group health insurance scheme for BSNL employees, special medical facility for the COVID-19, and a special COVID-19 term insurance like working in other CPSU. These are the some other issue which needs a focused attention of the Director HR, especially in this COVID period, the medical issue. Most of the hospitals are denying treating the BSNL patient and admitting the BSNL patient. So I request the Director HR from on this platform that he should focus and reach out to the circles that they should ensure empanelment of more and more hospitals and the clearance of medical bill of the hospital so that they can treat BSNL employee also as a BSNL employee instead of treating them as a private customer. With this, some minor issues are there, which is within in the limit of the BSNL, where no financial stress are involved, like Rule 8 and Rule 9 cases, where people are suffering, working in a different tenure. We have discussed this issue with the Director HR. Rule 8 is a circle issue. We have requested to issue some guidelines to the circle that Rule 8 should be started clearing in a phased manner. Rule 9, some headway has been reached with the Director HR, and we are hopeful that some resolution will be coming in very due course of time. Another one is the J2JO bond period and bond amount. We have requested on this in the agenda meeting already that it should be on industry standard, but no progress has been made in this direction till date, which has nothing to do with the financial and nothing to do with any complication, legal complication. In that direction, I also like to attract the attention of the Director HR that these those things which has no financial implication in the company, that should be at least done immediately to give some confidence to the employee. Similarly, sabbatical leave and going to other department on deputation. We have already taken up this issue also, that deputation at ban order has been released recently that till December 2020 no deputation will be allowed, since the executive are not getting enough facility in terms of their pay, pension and promotion. They should be allowed to go on deputation also. We have already demanded with this CMD, BSNL and Director HR, although they have not given a clear signal. But we will again be pursuing this matter of opening the deputation, those who wanted to go to other departments, and Rule 9 cases. This is the issue. But after that, one more issue which I have just missed, that the restructuring, the department restructuring is already going on, and CMD BSNL has already told that they are very much in the advanced stage for the restructuring. We have already discussed this issue in detail on 9th, and we have requested that any restructuring of the department should not come in a way that hampers the promotional prospect of the executive. And we have requested that the whole, after restructuring process, the whole strength of the executive of the BSNL should be 20 to 25% higher than the working strength, so that sufficient number of posts should be there in promotional posts. And if BSNL wants to shorten the post, such post should be shortened, which is not invisible nowadays, which are not in line with this. But all the promotional posts like SD, AGM and DGM, these posts should be insufficient in number, because this is the promotional is the only basic motivation factor for a government employee. And since people have joined in BSNL as a government organization with a hope to get a proper career prospect, so we have requested that during restructuring process, this is a very sensitive aspect in terms of employees, and this sensitive aspect should be taken care of, that the promotional avenues should not be cutted. At least the promotional avenues should be protected in the restructuring process. This is what we have requested, and we are very much thankful that Director HR and CMD Mahoday has agreed and accepted that definitely promotion is one of the basic motivational factors, and they will ensure that this should not be suffered in the restructuring process. And with this, my brief, I would like once again to thanks our CMD BSNL
for joining this August meeting and sparing the time, and our Director HR Sahab, who is very kind-hearted person, and he has assured, and in fact he has given assurance that when he will leave the office, he will see that a completely transformed executive promotions issue will be in place in the time, and all the long pending issues will be solved. What he has assured, not only in this meeting but in person to us also. And so we again thank our respected Director HR Shri Arvind Bhadarkar sir to join this meeting and spare valuable time and give various aspects on the HR as well as BSNL issues. I also thank GMSR Sahab for joining this meeting and working as a conduit in between the management and the association and keeping the matter alive, whatever issue we are raising, and we are hopeful that he will continue to do the same. And I once again thanks All India President, our Vishil Verma ji, all our CHQ colleagues, and all the members who have joined this meeting. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you once again. Jai Hind. हेलो, आवाज आ रही है? बस हाँ, थैंक यू। आवाज आ रही है? आ रही है। आपने हमारे डायरेक्टर महोदय और लोगों को भरोसा दिलाया कि हम इस तरह से प्रयत्नशील रहेंगे इश्यूज को रिजॉल्व कराने के लिए। और इस पॉइंट पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मंजिलें थोड़ी मुश्किल जरूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मंजिलों तक हम जरूर पहुंचेंगे। और कामयाबी के सफर में अगर धूप ना हो, कामयाबी के सफर में अगर धूप ना हो और सिर्फ छांव ही छांव मिले, तो हम शायद कभी के सो गए होते। तो जागने के लिए जरूरी है कि मंजिलें मुश्किल हों और हम सब मिलके मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। इसी क्रम में बातचीत को जारी रखते हुए मैं अपने सीनियर GMSR महोदय श्री AM गुप्ता सर को इनवाइट करता हूं कि वो अपनी स्माइलिंग स्पीच के साथ हम सबको अनुग्रहित करें। धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून AIGETOA सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। रिस्पेक्टेड हाँ रवि जी, आपकी बात हमेशा याद रखेंगे कि कामयाबी के सफर में धूप बहुत काम आई। अगर छांव होती तो हम लोग सो गए होते। रिस्पेक्टेड CMD श्री PK पुरवार जी, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर HR श्री अरविंद वाडेकर जी। गुप्ता जी वीडियो चालू करो ना। जी सर, वीडियो चालू करो। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आप क्या मुस्कुराते हुए चेहरा देखना चाहते हैं सब लोग? अच्छा, शायद हमें तो लगा कि लोग देख रहे हैं। ना ना, अब दिखा। रिस्पेक्टेड CMD सर श्री पुरवार जी, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर HR श्री अरविंद वाडेकर जी, डियर वासी अहमद जी, जनरल सेक्रेटरी AIGETOA श्री रविशील जी, AIGETOA के जितने भी लीडर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो भी दूसरे एसोसिएशंस के और BSNL परिवार के जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि ये जो AIGETOA का AGM हो रहा है, इसके माध्यम से BSNL परिवार के सभी लोगों को एक हमारे जो CMD हैं उनका एक मैसेज आज सुनने को मिला। शायद ये बात हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करना हमें बहुत मुश्किल होता, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम अपने वसी अहमद जी को कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हमारे CMD साहब को, हमारे डायरेक्टर HR साहब को सारे लोगों ने सुना। जहां CMD साहब का जो स्पीच थी इतनी हौसला देने वाली थी, मोटिवेटिंग थी, तो
साथ में हमारे डायरेक्टर एचआर साहब की जो स्पीच थी काफ़ी फुल ऑफ इमोशंस थी और एक फुल ऑफ एश्योरेंस थी, और सुन के लोगों को वाकई में काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला होगा कि मैनेजमेंट डायरेक्टली जब हमारे सीएमडी और डायरेक्टर की मुंह से ये बातें सुनी होगी कि हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं, कैसे हम 2.0 जो आज का सब्जेक्ट भी है AIGTOA का कि 2.0 BSNL का रोड मैप क्या है। तो हमें लगता है कि जो ये BSNL 2.0 की बात है, ये 2.0 के संकेत तो हमें 1 साल पहले मिलना शुरू हो गए थे, जबकि हमारे CMD साहब ने ये परवार साहब ने टेक ओवर किया था। मुश्किलों का एक बड़ा अंबार था BSNL के सामने, तरह तरह की समस्याएं थी, लेकिन उनकी जो इंटरेक्शन का तरीका है और संबंध है, उसका पूरा उपयोग करके, बहुत ही हार्ड वर्क करके, ये चीज हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने पूरे समय, 7 दिन, पूरे साल भर किस तरह से काम करके पहले तो ये कोशिश की कि रिवाइवल पैकेज कैसे आएगा, और फिर रिवाइवल पैकेज आ गया तो जैसे अभी CMD साहब ने और डायरेक्टर साहब ने सारी चीजें बताई, वो ये बहुत मुश्किल सफर था। और जैसे अभी आपके रवि जी ने कहा कि ये पूरा धूप वाली सफर था, इसमें छाव तो बिल्कुल कहीं मिली ही नहीं। तो ये जो 2.0 का संकेत था हमारे पटवार साहब के आने के साथ ही शुरू हो गया था। फिर अगर हम 2.0 की बात करते हैं तो BSNL का जो 1.0 है वो भी एक काफी लंबा समय था, और 2.0 एक BSNL के लिए हम कहेंगे कि एक युग के परिवर्तन की तरह था। और जब युग परिवर्तन आता है तो उसके पहले कोई प्रवर्तक आता है, एक बदलने के लिए प्रणेता आता है, और वो हमें, ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि एक हमारे CMD जो इतने डायनेमिक है और इतना उनको लंबा अनुभव है और उतनी ही ज्यादा वो मेहनत भी करते हैं। तो उनकी वजह से हम ये संभव कर पाए कि वापस हमारी जो गाड़ी है पटरी पे आई, और आज हम ये BSNL 2.0 की बात कर रहे हैं। जैसे कि रवि जी ने कहा, वासी अहमद जी ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है ह्यूमन एसेट, ह्यूमन मैन पावर हमारा, जिसमें कि हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। उनकी बहुत लॉन्ग पेंडिंग समस्याएं हैं। तो दूसरा शुभ संकेत जो था कि हमारे जो डायरेक्टर HR है, ये भी हमारे एक सौभाग्य है कि वो उन्होंने ज्वाइन किया, और शायद हमें ये लगता है कि जो आपकी समस्याएं हैं ये उनको पहले से ही बहुत सारी चीजें मालूम थी और ये उन्होंने तैयारी की थी और एक इच्छा शक्ति के साथ में यहाँ आए हैं। अगर ये 1 साल निकला है इसमें बहुत आपको प्रोग्रेस नहीं दिखी, तो इसका कारण है कि ये जो रिवाइवल पैकेज के जो मुख्य जो एरियाज थे जिनमें हमें काम करना था, चाहे वो VRS का हो, लैंड मोनेटाइजेशन का हो, ये तो HR वर्टिकल के अंदर ही थे, और बॉन्ड्स वाला था। तो इस तरह से 4G का इश्यू अनफॉर्चुनेटली अभी उतनी गति नहीं पकड़ पाया है, तो इसमें उनका बहुत ही ज्यादा समय निकला। और अब जब ये चीज, बहुत सारी चीजें अपने परिणाम की तरफ बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से हमारे जो डायरेक्टर HR हैं, उनका पूरा ध्यान है इस बात को लेके कि आपकी जो भी समस्याएं हैं हमारे HR की, मैन पावर की, लॉन्ग पेंडिंग, कैसे उनमें तेजी आए। बहुत सारी चीजें अब यहाँ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टर HR साहब ने सारी चीजें काफी विस्तार से आपको बताई हैं कि हमने कैसे किस किस एरिया में क्या क्या प्रोग्रेस की है। CMD साहब ने तो काफी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको सारी चीजें बताई हैं। और एक और शुभ संकेत था कि जो हमारे यंग लीडर्स हैं, 1 साल पहले जब हम मिले थे मावलंकर हॉल में, तो हमने कहा था कि हमारे छोटे भाई हैं, और देखते ही देखते जो 1 साल में वो हमारे लीडर बन गए हैं। और जैसे अभी रविशील बार बार कह रहे थे, वसी जी ने भी कहा कि सबको पेशेंट रहने की जरूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो कॉर्पोरेट ऑफिस में आते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पेशेंट तो जो है रवि और वासी जी रहते हैं कि कब क्या होगा। हर दिन की हमसे डेट मांगते हैं कि ये किस डेट को होगा, वो किस डेट को होगा। तो ये हमारे काफी मैच्योर लीडर्स हैं, हमें इनका पूरा साथ मिल रहा है। इसके पहले भी जो एसोसिएशन थी उन्होंने भी अपना रोल काफी अच्छी तरह से निभाया, और हमें लगता है कि इसी तरह से ये जो परंपरा है BSNL में एसोसिएशंस और यूनियंस के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और इसीलिए हम लोगों का जो एक ये जो ट्रस्ट का और एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ये बना हुआ है।
और ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं इसका एक नमूना ये भी है कि आज CMD ने इतना व्यस्त कार्यक्रम में से, डायरेक्टर HR ने अपने इतना व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और आपके AGM में आए। हमेशा इसके पहले 3-3 साल में आप लोगों से बातें होती थी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये समय ऐसा है कि शायद CMD साहब भी चाहते थे कि जो बातें वासी जी से होती है, रविशील जी से होती है यहाँ पे, वो सारे अपने एम्प्लॉइज को भी बताई जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 3 साल का उनका टेन्योर है और आगे भी वो काम करते रहेंगे। उन्होंने लोगों का विश्वास जीता है, तो उनके बिहाफ पे सबसे पहले मैं CMD साहब को और डायरेक्टर HR साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और हमारे एसोसिएशन के ये कार्यक्रम में भाग लिया, लोगों को अपनी बातें बताई। और इससे निश्चित रूप से ना केवल जो अभी ये जुड़े हुए हैं या मेंबर्स हैं इस कॉन्फ्रेंस के मीटिंग के, बल्कि जो लोग भी पूरे भारत भर में सुन रहे हैं सभी को काफी प्रोत्साहन मिला होगा, हौसला मिला होगा और एक एश्योरेंस मिला होगा। अब आपका ये जो 2 दिन की चर्चा है, इसमें जैसा डायरेक्टर साहब ने कहा था काफी अच्छे सुझाव आएंगे लोगों से और आपके माध्यम से ये हमें बाद में मिलेगा। तो इस सब के लिए हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको 2 दिन की चर्चा के लिए और AIGTO के उज्जवल भविष्य के लिए। और BSNL के जो भी एम्प्लॉइज अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब क्योंकि ये नया साल हम लोगों का आने वाला है, पुराना साल खत्म हुआ, हमें उम्मीद, मतलब ये सबसे पहले तो संतोष इस बात का है कि इस साल में हमें जो बड़े बड़े काम थे, VRS के काम थे और जो लैंड मोनेटाइजेशन के लिए, रेंटिंग के लिए जो पॉलिसी बनाना थी, सारी चीजें अब हमारे शेप में आ गई हैं। तो जिस चीज अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट इमीडिएटली हमें क्या देखने मिला, लेकिन हम लोगों को जो न्यू रखना थी भविष्य के लिए 2.0 के लिए, वो न्यू हम लोगों ने रख दी है और सारे शुभ संकेत हम लोगों के सामने हैं। तो निश्चित रूप से BSNL का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। एक बार फिर से मैं AIGTOA को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए और एक मौका देने के लिए कि हम सभी लोगों से बातचीत कर पाए सीधे। धन्यवाद वसी जी, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आपके एक अच्छा एड्रेस लोगों को अपने वही सेम ओल्ड स्टाइल एक स्माइलिंग डेलिब्रेशन के साथ आपने लोगों को अवगत कराया और हम आपका इसलिए भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे एफर्ट्स को भी आपने हाईलाइट किया, आपने मैनेजमेंट के एफर्ट्स को भी बताया। और GMSR का जो रोल होता है सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू हैव बीन एग्जीक्यूटिंग दिस रोल फॉर इयर्स एंड यस देयर वर सर्टेन टफ मोमेंट्स, अप्स डाउन्स, खट्टी मीठी बातें होती हैं क्योंकि हमारा आपका रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन इस बात को मैं तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूं कि आपने हमेशा चीजों को आगे ले जाने में मदद करी है। आपने, धन्यवाद आपका कि आपने हमारी जो पब्लिक ने जो हमें भरोसा दिखाया है उसको आपने एक्नॉलेज किया। और सर यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक का भरोसा और बढ़े, तो एक बार वो मेंबरशिप चेंज विंडो जो दिसंबर वाली पेंडिंग है वो खोलने की कोशिश, ताकि पता लग जाए कि कितना भरोसा हम पे है, या भरोसा उठ गया है या भरोसा बढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे ऊपर भरोसा बढ़ा ही होगा, हो सकता है भरोसा कम हो गया हो। तो एक बार सर वो मेंबरशिप चेंज विंडो भी खुल जानी चाहिए दोबारा, ताकि एक एक्चुअल असेसमेंट ऑफ द सपोर्ट हमें भी पता लगे और हम उसी हिसाब से अपने आगे का कार्यक्रम और अपनी रूपरेखा तय कर सकें। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर स्पीच and thanks for your blessings. Now I would request my chairman of AIGTOA have one honorary post called chairman, who is basically looking after all the activities of CHQ, और कुछ भी कहीं कुछ चीजें जो होती हैं उनके ऊपर वो अंकुश लगा के रखते हैं। तो मैं अपने चेयरमैन बी लक्ष्मण जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने ब्रीफ भाषण से वो लोगों को अनुग्रहित करें और हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर HR और GMSR साहब को
हमारे एसोसिएशन के एस्पिरेशन से अवगत कराएं और समय का ध्यान रखा जाए। सिर्फ स्पेसिफिक लक्ष्मण जी के लिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि काफी समय हो चुका है। तो धन्यवाद लक्ष्मण जी, आप शुरू करें। थैंक यू रवि जी। Respected CMD BSNL Sri Purvat ji, Director HR Sri Vadnekar ji, and Senior GMSR Gupta ji, and our All India President Ravishil Verma ji, General Secretary Sri Wasi Ahmed ji, and all our CHQ members, circle leaders, collegium members, and district secretaries, and all other friends and colleagues of the BSNL who are watching through our website and through YouTube, through online mode. Very good evening, all of you. Dear friends, Abhi, as President has told, the time is less. So first of all, let me congratulate all of us for making this event a very grand success. From my bottom of heart, I would like to thank our beloved CMD sir, Director HR sir, and GMSR sir for participating in our AGM and explaining their thought process, and whatever the open session topic that we have kept the roadmap ahead with respect to the BSNL 2.0. Accordingly, the apt discussion took place. Now our Honorable CMD sir and Director HR has given a very clear path and thought process of the management, how they are moving, and they have given the direction to all the BSNL fraternity to move ahead and make this BSNL 2.0 a fruitful one, so that all the golden days will come back and all our careers will be a good manner and our ambitions, wishes will be fulfilled. Thank you very much, sir. And let me tell few words. I will not take much time. Firstly, let me congratulate and thanks to all the BSNL executives who voted for AGTO. Though the AGTO paid member is little less than the other association, they voted us. They showed the confidence, faith on the AGTO, and for that, from my bottom of my heart, I would like to thank all the executives of the BSNL for making AGTO as recognized association. Similarly, I would like to also thank the management who conducted the referendum even during the time of COVID. Thank you for that one, sir. And with coming to the revival of the BSNL, as per the topic, already much discussion has taken place. CMD sir has clearly explained. I think we don't need more further discussion on this, but let me put my thought process, though it is already mentioned by several speakers. Yes, sir, it is true that everybody knows, even our management also reiterated that without 4G, the revival of the BSNL cannot be completed. So with this thought process, management is working with the government of India, and it looks like even our CMD sir is fighting with the government of India for rolling up the 4G services as per the present market conditions. Instead of going for our own Indian technology, our BSNL management is putting its fullest efforts in front of the government of India for going ahead for the 4G services very soon. Hope the government of India will understand the feelings and the revival of the BSNL, and it will sense the launching of 4G services immediately. And whatever the Indian core technology they want to implement, government of India, they can implement it on 5G, or they can have some reserve of some 10%, 15% of the locations where they can implement and move ahead. So that is already been explained, and whatever the CMD sir is explained very clearly. If any delay is there, definitely we all should work and manage. Government of India has to compensate for it, or else the revival of the BSNL is not possible. So thank you, sir. Thank you. I would like to thank the CMD sir and management, whole management who are working for the rollout of 4G. And going back to the
since I am the field person who is working in the field, let me touch upon already certain issues are there which I would like to bring to the notice of the BSNL management. Like CMD sir has very clearly told to maintain the uptime of the network, and he has already clearly told that only 5% of the customers are active in the market are with BSNL. So the main reason, majority of the BTS or the transmission media or the exchanges are going down, as we all know, due to the weak battery sets at cell BTSs or at remote exchanges and in our network element areas. So though BSNL is facing an acute shortage of funds, but I feel that BSNL corporate office has to give the direction to the circles to immediately upgrade the battery sets in best possible manner at cell BTSs, so that our uptime can be improved and thereby the revenue can also be improved. And similarly, the OFC routes where the frequent interruptions are being occurred, and because of the shortage of the funds for operations like temporary advances, many of the complaints are not being attended in time. So I would like to request to bring to the notice of the management that the regular funds towards the temporary advances wherever it is required is also required, may not be 100%, but the regular flow of the temporary advances is also required to maintain the quality of the service and to meet the requirement of the customers in this FTTH era and the internet era, where the even 5 minutes, 10 minutes of interruption of the services is making the situation worse. So this BTS and the temporary advances, BTS uptime maintenance and temporary advances are two are the major field issues which we are facing, and the outsourcing which was done in the segment of the CFA and the franchisee enrollment. I would like to tell all our BSNL executives that the new concept of the franchise, operations maintenance activities through franchises, it has been done this year after the VRS, and we all need to practice the good practices. We have to learn how to get the works done through these franchises, because here and there I felt that many of our executives are working the same old pattern, where we have to learn to optimal best utilization of the outsourced man, either tip or franchisee, whatever it is. So whatever the responsibility given after outsourcing, it has to be, we have to get the maximum works from our outsourced man. And there are some issues with respect to the core network. Has already been discussed by our General Secretary, and even the CMD sir has already explained. Though the matter is in the notice of the corporate office, I would like to say that the backbone, the core network, MPLS core network, and the international bandwidths and the peering services, cache servers, the peering links, cache servers are the need of hour to have the uptime in the BSNL core, and the regular complaints of the customers in the field. When they compare with the private operators, they simply compare that though we are giving 200, 300 Mbps, our downloads are not matching with the private operators, and some VPN issues are also there. So in this regard, I would like to appeal the management, kindly take the best possible effort to increase the internet core networks, point of presences, cache servers, and the required network elements to make the rigid and quality of service in terms of the FTTH services. So, and another aspect for the customer is we are having our BSNL BSNL app. Similarly, what I would suggest that all the services of the BSNL should be visible in the My BSNL app, as I feel that there are so many things are missing in the My BSNL app, because if you see the private operators mobile app, it will have maximum all types of services in the single app.
So the necessary actions and immediate actions can be taken up so that our BSNL app will be act like a single point of contact for the customer interface, where he can do all the, he can take all the services of the BSNL, he can purchase all the services of the BSNL, he can interact with the BSNL as a single point of contact. So this is based upon the feasibility, this can be done. And similarly, in the field, we have got the CRM clarity system, and nowadays we are more relying and depending on the FMS system. So as a field man, there are little bit complaints regarding the slow process of the activities from FMS to clarity and FMS to CRM. So I think there needs to be some infrastructure upgradation in order to improve the response time between these three applications. So I request the corporate office management, director CFA or CMD BSNL, sir, kindly look into this matter, which will improve the operational activities in the field for giving the immediate and services to the customer. And and apart from these field issues, let me give some my viewpoint on the restructuring of the staff. Already our General Secretary sir already clearly explained. But let me tell one thing, sir. In BSNL, the youngsters, we are all the youngsters groups. I joined BSNL and worked for last nearly about 18 to 19 years. And even the single promotion, we some of the people didn't receive. And we are now at the age of 40 to 45 years of age. And now after VRS, AGTO has the only association which has came out and openly supported the VRS and revival of steps in front of the government of India, and after which the government of India has announced the revival package. And now we need to get the opportunity to run the middle level and above middle level management cadre in the BSNL. Hello? Is it audible? Yes, yes. Yeah. So I would like to request the BSNL management to consider the restructuring plan as per the aspirations of the remaining executives to carry to move ahead at the AGM and DGM cadres. As you all know, sir, at the field level, all the posts at the level of DGM and AGM and even at the SD cadre are given on the looking after basis. That means the work is going on, but in fact the real promotions are not being given to the executives. So when the already executives are working on look after basis and already they are working higher scales, as our general secretaries are told, there is nothing like just like a change of designation, name change of designation that can be done by the BSNL management immediately. So if, and in related to this, we all know that now the DGM and above level officers are around the 300, at the most 300 to 400 maybe working, and we all know that the existing higher officers may retire or may absorb some other department in coming 4 to 5 years. So now after the question arises, who is going to run the BSNL? So the contingency plan for future plan, as already Director HR sir has already explained, told that they are working on this aspect also. But I would like to put upon this point that until and unless immediate AGM and DGM promotions are issued immediately, the middle level management, the tuning of the managerial level cannot be done in a single day or single year. So, sir, we all, management has to look upon into these issues, and the promotions in these cadres at the cadre of SDE, AGM, and DGM are to be done as the field is facing an acute shortage in the cadre of DGM and AGM. So, which will also have the fill the contingency plan of the BSNL in future. So I appeal upon fill up these vacancies as early as possible, sir. And regarding the medical also, many of the queries are coming in this pandemic situation. Many people have working in the field and they have already got the positive, they face the this corona.
And unfortunately, no single hospital is allowing us to join and is allowing us to use our medical policy. Already our association has submitted regarding with this our views. Since the management BSNL is not in a position to pay all the bills, no hospital is allowing to join. So as we shared our view, we may form a fund, COVID fund or a medical fund, where an employee can take the advance and against which he can submit the bill, so that in this scenario we need not to pay clear the pending bills to the hospitals as a temporary measure. It may not be permanent, and we can give the some support to them. Sorry, hello. So sorry, so I request to have the medical policy in place for at least supporting the employees of the executives of the BSNL. So after that, I will also suggest some bundling like of plans and launching of the IPTV services or the FTTS, because our rivals, Geo and all the operators have started this kind of plans, so that we can also attract the customers. So dear friends, all other items have already been discussed with our expressed by our All India President and General Secretary, and already even our Director HR sir and CMD sir has already clearly explained. So once again, I would like to thank all the participants and the BSNL management for sparing their time and participating this AGM open session, and hope the better days are ahead, and hope the management, as promised with the Director HR and CMD sir, the good days are ahead, and now from onwards, all the HR issues will be resolved one by one, and hopefully we will have better future. Thank you one and all. Jai Hind. Thank you. Jai. Very good words, and for apprising the management about the various apprehensions and various aspirations which we have from BSNL. Though I am sorry that I have interrupted you in between, because there was a limit to time. So sorry for that. And now सर एक छोटा सा इशू और रहेगा, वो हमारे एग्जीक्यूटिव कैडर को पर्टेन नहीं करता है, लेकिन एक चीज है कि टीटीएस जेई से जेटीओ का एग्जामिनेशन भी बहुत दिन से, और वो बेसिकली सर यूनियंस उठाती हैं, लेकिन चूंकि वो भी एग्जीक्यूटिव जेटीओ जो है वो भी एग्जीक्यूटिव कैडर को पर्टेन कर, तो सर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, और इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं कि इस बात को मैं पहले नहीं, सर इस दिशा में कैडर जो अन्वित होगा, अच्छे लोग जेई कैडर में। सर आपका स्पीच प्रॉपरली नहीं आ रहा है अभी सर। ये विशेष हेलो, जैसा कि हमने देखा, अब आ रही है? हाँ, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में भी ये इनविसेस्ड है कि जेई जेटीओ को आप इंटरचेंजेबल मान रहे हैं, लेकिन सर जेटीओ होता है, इसलिए आइडिया ठीक रहेगा। एटा अलग लोक देखियो जो पूरा प्लानिंग रे बसाई। सो आई वुड रिक्वेस्ट सर कि इस दिशा में भी ध्यान दें, और मैं बहुत ही अपने आप को अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं कि आपने इतना समय हमारे लिए दिया। रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वोट ऑफ थैंक्स एक्सटेंड करें, उसके बाद फिर मीटिंग घोषणा करूंगा। सेकंड टू वसीम। कौन बोला? दीपक साहब बोलिए। हेलो, आ रही आवाज आ रही। गुड इवनिंग।
respected All India President AIGTOA Ravishil Verma sir, our esteemed Honorable CMD BSNL Praveen Kumar Parwar sir, respected Director HR BSNL Board Arvind Ajnekar sir, respected Senior GM SR BSNL Corporate Office AM Gupta sir, respected GS AIGTOA Wasi Ahmad sir, respected Chairman Lakshman Banos sir, my CHQ team, all the circle office bearers, and the executive fraternity of BSNL attending online this AGM AIGTO. Good evening to all and everyone attending this meeting. It is a great privilege for me to present vote of thanks on behalf of #1 Representative Association AIGTOA on this August gathering. First of all, I would like to my heartfelt thanks to our Honorable CMD, Sir P.K. Parwar sir, for attending the AGM of AIGTOA CHQ in spite of his busy schedule in a short notice and addressing all the technical HR issues of BSNL. Yes, through AIGTO, we have through webcasting, we tried our best to send your message, send your motivational message, each and every executive, non-executive of BSNL. Sir, congratulate AIGTO, became #1. Yes, he told this is the time for the young people, young group should lead the organization, and he wishes all the best for our AGM for these 2 days. And his mission for this BSNL 2.0 was that we should be significant player in mobile segment. That means we should acquire minimum 20% market share and to achieve 20% market share, he has given some mantras. That is immediate rollout of 4G services, maintaining quality of service, network uptime, and we have to be techno-commercial organization. And apart from above, we all should be brand ambassador of BSNL. Thank you, sir, for this message. Definitely, all the executive fraternity, all the employees will follow. Definitely try our best to bring BSNL to the track. Yes, finally, he addressed that the flag of BSNL is in the hand of the young executive. And he appealed all these executive to be brand ambassador and work footing basis to bring this organization to a profitable organization. Thank you, sir, for your valuable speech. Then I would like to thank our Honorable Director, BSNL Board, for Arvind Bhadenkar sir, for his highly emotional, motivational speech. Sir addressed that out of 5 government revival package, they have already successfully implemented 2, and he's working, that his BSNL board working day and night for completing our remaining 3 revival package to bring back BSNL to right track. And he assured that his HR team is working day and night to settle the long pending HR issues of executive practice pending since the formation of BSNL. He also addressed, for a successful organization, we require a highly motivational workforce. And he addressed that his team is working, and very soon, in all these HR issues, he's going to give good news. He do not want to assure the time, set the timeline, but he assured that definitely they will work to reach the expectation of the executives and settle their long pending HR issue. Thank you, sir. Thank you very much. Then I would like to thank our senior GM SR BSNL Corporate Office AM Gupta sir, his smiling speech which our president addressed, that always he used to smile. And yes, there is a lot of interaction with you in last few previously also with our AGO team, but you always try to help us. Today, with the help of you,
You have conducted the membership verification successfully, and with your blessing, all of the blessing of the management, we became the, and blessing of the executive fraternity, we became number one. Thank you, sir, during the your support during the MB period, and you for attending our AGM. Wishing all the best for the grand success of our AGM and your motivational speech. And thank you all, sir. Then I'd like to thank our All India President, one man behind all the success of AIG2A, our beloved President, Sri Ravi Verma ji, for his day and night hard work to make this event in a short notice become grand success. Because we have noticed in a very short time, and organizing such an event within a disciplined manner, he worked day and night with our organizing team and taken all pains, preparation of report, preparation of financial report, all the things, and how to organize this function smoothly. I thanks our All India President, and I think if you will test its each and every element of his blood, you will find his AIG name will be there. He is such a person of AIG2A. He has given some things. He assured management that executive fraternity of BSNL is ready to give their effort 24/7 for the survival of these things. He has given a mantra to executive fraternity: try to achieve your goal, responsibility, job assigned to you, and try for survival of the company. Company survival, then we will survive. With this, I once again thanks our All India President Ravi Verma ji. Then the man who is leading the front, our General Secretary Mohammad Wasi Ahmad ji, in spite of all difficulties, even staying at Patna, he is regularly visiting Delhi, working for the cadre in spite of many issues. 24/7 he is working for the cadre, and due to his effort after winning MB, many HR issues, many technical issues already come into the forefront, and they are going to be settled very soon. Our GS assured that management that definitely we will extend all cooperation. He also assured that the need of the hour is rollout of 4G, and he assured that if required, we will take the help of all stakeholders to make the rollout of 4G at the earliest in BSNL for the survival of the company. He addressed all HR issues and assured the BSNL executive fraternity that soon he will try his best settlement of all long pending issue with help of the management. Thank you, sir. Thank you for your hard work, sir. Then I would like to thank our chairman, Sri Lakshman Banerjee. See, he is the man behind our all sense. He's working from backdoor, but he's working all the technical suggestions, all the inputs, all the how association run. It is only our chairman sir. He's guiding. He's a guiding force. He's giving all his guidance, how we will move, how we should act. And today also, as he is from the field unit, he has given many suggestions what support we need from management to run our services in the field unit. Thank you, sir. On behalf of AIGTO CHQ, I would like to thank Executive Fraternity of BSNL for attending this function online and watching this program through AIGTOCHQ.org website and making this function a grand success. And also, once again, I want to thank for your love, affection, and trust for AIGTO to make it #1 representative association. Definitely, we will try our best to fulfill and reach your expectation. On behalf of AIGTO CHQ, I sincere thanks my entire CHQ team, my entire circle team for making this function a grand success in a very short notice.
Thank you, my CHQ and circle team. Last but not least, on behalf of AIG to CHQ, I would like to thank the organizing team who worked for last 1 week to make this event a great success. Especially my CHQ colleague, M. Sridhar Babu Garu from J South from Telangana, Andhra Pradesh, and my AGS Pawan Akhandji for your effort making this event is a great success. Thank you entire organizing team from behalf of AIG to CHQ. Thank you all. Long live AIG, long live BSNL, long live AIGTO. Thank you, thank you, thank you all. Thank you all. आपके इस उद्बोधन के लिए और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर एक्सटेंडिंग द वोट ऑफ थैंक्स एंड फाइनली कंक्लूड करने के लिए मैं जनरल सेक्रेटरी श्री वसी अहमद जी को इनवाइट करना चाहूँगा। उसके पहले मैं सिर्फ एक मंत्र जो मैं पर्सनली और हमारी एसोसिएशन फॉलो कर रही है वो कहना चाहूँगा कि सारी दुनिया कहती है हार मान जाओ, सारी दुनिया कहती है कि हार मान जाओ, लेकिन दिल के कोने से कहीं एक आवाज आती है, एक कोशिश और कर तो सही, सफलता तेरे हाथ। इसी ध्येय के साथ, इसी एम्बिशन के साथ, इसी एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी मैनेजमेंट टीम का, अपने सीएमडी साहब का, अपने डायरेक्टर एचआर साहब का, जीएमएसआर साहब का, जनरल सेक्रेटरी, ऑल सीएचक्यू कलीग्स, स्पेशली श्रीधर बाबू, द सीआरएम मैन, जो सीआरएम जो बीएसएनएल का चल रहा है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बैक में काम करते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं, वसी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, पवन अखंड जी का भी धन्यवाद, जो दोनों ने मिलकर टेक्निकलिटीज, मीटिंग की टेक्निकलिटीज को संभाला। वसी जी कृपया अब मीटिंग को कंक्लूड करें और हमें अनुग्रहित करें। थैंक यू। आज मुझे याद आ रही है बात डायरेक्टर एचआर साहब की, जब इलेक्शन हो रहा था उन्होंने कहा था आप एक यंग माइंड हैं, यू हैव टू शो योर पोटेंशियल। आज जिस तरह से श्रीधर जी और पवन जी ने इस पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार उन्होंने उस बात को स्थापित किया है जिसको बीएसएल मैनेजमेंट हमेशा कहता आया है कि यू हैव द मेरिट एंड यू हैव द मेरिट टू लीड। आई डू होप के ये चीज आगे जाएगी और कार्यों में और डिसीजन में भी दिखेगी। जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो शब्द हैं वो कार्य में जब तक नहीं आएंगे, जो डिसीजन में नहीं आएंगे, तो वो पूरी तरह अपना मायने नहीं दिखा पाते हैं। और मैं एक लास्ट शेर के साथ अपनी बातें खत्म करूंगा। उसके पहले मैं एक बार पुनः अपने सीएमडी महोदय, डायरेक्टर एचआर महोदय, जीएमएसआर महोदय के तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अपना इतना समय निकाला हमारे लिए। सितारों के आगे जहां और भी हैं, ये इकबाल का एक शेर है सर, यह हमारे लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क में इम्तिहान और भी हैं। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वेरी गुड नाइट। मीटिंग कंक्लूड होती है, सभी लोग एग्जिट कर जाएं। Sir, can we end the meeting or? मीटिंग एंड होती है, कंक्लूड कर दी। सीधा बाबू एंड कर दी। Yes, sir. Just as you given final remarks, just I am ending the meeting, sir. I will wait for a while till our chief guests leave the meeting. Yes, sir. Good night all. I am ending, sir. Ending the meeting.